Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, your fan channel for all to see. Or yes, big Champions League night वापस आ गया. Second match day. Z by in the house. Z by excited. So much, man. Ankit So bhai, much. let's go. Champions League nights makes us feel like alive. So yes, here we are again for the preview discussion. Great to be here, Ankit bhai. Looking forward to the conversation and to the chat. Always. Yes, let's go. Absolutely. लेकिन जी भाई first and foremost मेरा question है. I know first match day is not too much of a sample size आपको judge करने के लिए, लेकिन with that first match day क्या लगता है मतलब early doors मतलब who seems to be a little bit more ready than the others in terms of Champions League इस बार और जो आप देख रहे हो even leagues हम follow करते ही है, which is that team जो based on match day 1 और on the leagues आप बोल रहे हो यार that is the team to watch इस बार. Well, Ankit, bhai, as you know, we just talked about about it very soon, and we found out that इस बार कोई ऐसा particular favorite out and out right favorite कोई ऐसा लग नहीं रहा है. Well, right, City is obviously there winning the treble, but City has also gone on a lot of changes and form भी थोड़ा सा questionable हम कह सकते हैं. But then in a longer run, in a longer stretch, there would be teams जो pick off कर लेंगी a bit mid in the season, a bit late as well. Champions League के round 16 में अगर आप पहुंच गए तो फिर then over there anything can happen. There have been a lot of teams यार जो कि they have surprised me. Obviously, Bayern, we have to look कि भाई Bayern कैसे settle होती है ultimately. There have been problems with Bayern Munich. उनके गेम में पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले गेम में, बट yes, there are a couple of teams जो कि have looked better than the rest, but एक match day is like a very less sample size obviously. So इस match day बिल्कुल. से again we will find out कि कौन सी team is right up there. तो yeah, we go again. एब्सोल्युटली. और भाई मतलब ऑब्वियसली इतने सारे मैचेस हैं हम देखेंगे मैचेस पर, लेकिन ऑब्वियसली दीज आर द ग्रुप्स जस्ट टू रिफ्रेश. अभी 2 हफ्ते हो गए. प्रीटी श्योर आज रात को भाई मैचेस है तो यू आर ऑल रेडी, लेकिन ग्रुप ऑफ डेथ वाला फील तो आया था यार मतलब स्पेशली वो हाँ. न्यूकासल और मिलान वाला गेम. इट सीम लाइक कहीं ना कहीं नीदर ऑफ द टीम वांटेड टू गिव इट अवे. आई नो मिलान ने डोमिनेट किया था वो गेम, लेकिन जनरली स्पीकिंग अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रुप कौन से दूसरे ग्रुप्स में यू फील किया थिंग्स माइट बी क्लोजर देन एंटिसिपेटेड. Well, closer than expected. अंकित भाई ये जो ग्रुप बी है ना, इट इज अ वेरी अपीलिंग ग्रुप. मतलब सेविया, आर्सेनल, पीएसवी और लॉन्स. ये ग्रुप लाइक इट कुड बी ओपन. एक ऑड विन ऑफ पीएसवी, एक ऑड विन ऑफ ड्रॉ ऑफ लॉन्स. आर्सेनल खेलने वाली ऑब्वियसली ओवर देयर, सो समथिंग वुड चेंज ओवर देयर. द नेक्स्ट ग्रुप जो मुझे बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रहा है वो ग्रुप डी लग रहा है, विद बेंफिका, इंटर, साल्जबर्ग एंड सोसिएडाड. आई मीन ऑल ऑफ द टीम्स आर ओवर देयर. Comparable है in terms of strengths. Well, obviously Inter थोड़ा सा stand apart करती है because of their recent performances. And well, obviously group F तो है ही है भाई तगड़ा, the group of death that we are talking about. So group D अपील कर रहे हैं मुझे. And even if you look at the group E as well, Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic, तीन teams में से looks हाँ, like नॉट अ गिव anything अवे. can happen. स्पेशली वो जो प्रोविडल Yeah. का लास्ट मिनट जो गोल आया था ना अरे गोलकीपर का, उसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ग्रुप. यू आर crazy, राइट एक्चुअली. काफी crazy man. Yeah. ऑल्सो भाई हम बात करेंगे मैचेस का, लेकिन इट रिमाइंड्स मी सेल्टिक. आई नो दैट दे लॉस्ट द फर्स्ट गेम, लेकिन दे वर डाउन टू 9 men, तो इट्स डिफिकल्ट टू जज अभी वो ग्रुप भी एब्सोल्युटली. Hmm. लेकिन टॉकिंग अबाउट द मैचेस आ जाते हैं भाई मैच डे 2 पर आ जाते हैं भाई सब लोग जो भी यहाँ पर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज अगेन. hit the like button, definitely check out our parents channels as always tagged below. लेकिन हाँ, हर्षा इन द हाउस के अलावा अर्नेस्टो चेक, गौरव, जनरल ट्रोसार्ड एज ऑलवेज भाई. आजकल जनरल ट्रोसार्ड इज वेरी एक्टिव बिकॉज़ आर्सेनल हैविंग गुड डेज, लेकिन नाइस टू सी दैट फॉर श्योर. एंड यस ऑफ कोर्स ये ओपी हो जाए एवरीवन. फायनोर्ड इज ओपी या फायनोर्ड भाई मतलब डच फुटबॉल सपोर्टर है. गौरव एज वेल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन जब मैं बोलता हूँ निंजा गेमिंग इन द हाउस. नाइस टू सी सब लोग भाई. तो मैच डे 2 और हम आज रात को कवर करेंगे नापोली वर्सेस रियल मैड्रिड. जी भाई मतलब वुड यू से दैट दैट हैज टू बी द मैच ऑफ द राउंड कि आप बोलोगे यार इट इज द ग्रुप ऑफ डेथ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक डिफरेंस मेकर मैच डे 2 में सब कौन सा मैचेस में फोकस करेंगे सबसे ज्यादा. मेरा फोकस वेल ऑब्वियसली यार ये दो टॉप टीम्स यार नापोली और रियल मैड्रिड आर प्लेइंग टुगेदर, एंड दिस वुड बी द गेम जो मैं एक्चुअली करने वाला हूँ अलोंग विद मैनचेस्टर वर्सेस गैलाटासराय, बिकॉज जैसा भी कहो ये गेम अंडररेटेड होने वाला है. आई एम पर्टिकुलरली एक्साइटेड टू सी कि भाई यूनाइटेड कैसे फेस करेगी
Galatasaray को. It won't be an easy game for either of the teams, obviously with different reasons. But ये दो मैचेस है जो कि आज particularly मैं फोकस करूंगा. बट कल अंकित भाई लाइक डॉर्टमुंड अप अगेंस्ट मिलान और न्यूकासल होस्टिंग पीएसजी. और न्यूकासल का हमने देखा कि उन्होंने सेंट जेम्स पार्क के ऊपर उन्होंने कैसे एक ड्रोन शो किया था. एंड दैट वाज सो अमेजिंग भाई साहब. 20 सालों बाद दे आर बैक इन द चैंपियंस लीग. और जिस हिसाब से उन्होंने वो वेलकम किया है ना, आई मीन दे आर रेडी फॉर इट. एंड कहीं ना कहीं वाइब्स आ रही है कि इस इन दो मैचेस में मजा आने वाला है बहुत बेहतरीन. एंड ऑब्वियसली बीइंग अ बार्सा फैन, पोर्टो वर्सेस बार्सा इज ऑलवेज अपीलिंग. सो या, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. काफी सारे सब प्लॉट्स है जिसके बारे में हमने बात करना है. बट वील कम टू पोर्टो वर्सेस बार्सा 100%. जीबा इन द हाउस, हाउ कैन वी मिस दैट? एंड जनरली स्पीकिंग भी आई थिंक कहीं ना कहीं एक एलिमेंट रहेगा उस मैच में. लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप ऑफ डेथ. क्या बोलते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ डेथ में एब्सोल्युटली, लेट्स गो. डॉर्टमंड वर्सेस मिलान. जी वाओ. भाई, हम बात किए थे कल, बट जस्ट एडिंग इनटू दैट, मतलब मिलान, इज इट टू गुड टू बी ट्रू यार? इतने सारे आपने चेंजेस किया और फिर जो फॉर्म दिखा रही है. यस, इंटर मिलान वाला मैच याद नहीं रखूंगा. दैट इज द ओनली मैच टू फॉरगेट इस सीजन का मिलान का. ऑब्वियसली दैट मिलान डर्बी वाज बैड, लेकिन लेट्स बी रियल, न्यूकासल मैच भी मिलान शुड हैव वन इट. वर्सेस डॉर्टमंड उल्टा रहा है कहीं ना कहीं. आई थिंक लास्ट सीजन वो, क्या बोलते हो, मतलब बेलिंगहम गोइंग अवे ऑब्वियसली इज ह्यूज. But why do you think is Dortmund performing? Is it because last season के last day में they lost the league? मतलब they have not started the season well. आप हम प्री सीजन में खेले थे Chelsea, but I don't think there is a surety उनके 11 में in terms of the players. What do you think is missing? मुझे लगता है कि डॉर्टमुंड को लाइक सेटबैक लगा होगा ऑब्वियसली ऑफ लूजिंग दैट टाइटल ऑन द वेरी लास्ट डे. बट लाइक, I mean, they are a professional team. They should grow up, move on. Like what has to be said about them particularly. They are अगर डॉर्टमुंड वही अपने पुराने पिछले साल के मोर्निंग में है तो they should wake up now. And yes, जैसे कि अंकित भाई आपने कहा, start has been really poor of Dortmund. हर मैच में particularly minimum एक गोल वो खाए हैं. Defensively they look horrendous. And obviously कल हमने डिस्कस किया था इसमें हुमल्स और श्लॉटेबेक की गलतियों का को बहुत बड़ा पार्ट रहा है. दो उनकी जो दो फुल बैक्स हैं, बेंसिबाइनी और रेसन, although attacking wise they are good, but they leave a lot of spaces in behind. Midfield में they have been a little bit of a problem कि भाई कौन start करेगा. Will it be Emre Can, Oz Can, Sabitzer भी वहाँ पे है. So I don't know what is currently happening, जो major problem exactly क्या है. But कहीं ना कहीं you see कि एक problem उनके पास जो नहीं है वो है कि they always come up with goals. Reus is scoring, Adeyemi is scoring, they get the goals. Dolan Malen can get the goals. Goals वो निकाल रहे हैं. So तभी ये जो मिलान वाला गेम है डॉर्टमुंड के अगेंस्ट सिग्नल इडूना पे, आई एक्सपेक्ट कि भाई ये गेम एक हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है. मिलान ऑल्सो ऑन गुड फॉर्म. बट मिलान की जहां तक बात है, जैसा आपने कहा, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटर वाला गेम, दिस shocking था वो इंटर वाला गेम. अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव लुक्ड गुड, दे हैव लुक्ड डिफेंसिवली सॉलिड. बट it's मिलान, the problem with Milan is consistency. One day they are a very good team, another day they forget how to play football. So ये चीज उनको eradicate करनी होगी. And when they do it, I think they'll be a top team. And yes, they have improved a lot. और जूड बिलिंगम के जाने से definitely डॉर्टमुंड को काफी फर्क पड़ा है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अगेन मतलब पीपल आर आस्किंग फॉर कंबाइंड 11. विल कम बैक टू दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रीम. टाइम रहे तो फॉर श्योर. अभिषेक अगेन बिग अप यार, क्या हाल है भाई? यस, एब्सोल्युटली थैंक्स. वी आर लिटरली 100 अवे फ्रॉम 100 के. 11 के, होपफुली वी गेट टू 100 के वेरी सून एज वेल. लेकिन हाँ, इवन ऑन द अदर चैनल 4 के वी आर लिटरली 10 अवे. और जी भाई के दोनों चैनल्स टैग्ड यार, इंक्लूडिंग टॉक फुटबॉल ईटी. लेट्स गो मिलान 100%. लेकिन सुनने मारा लॉफ्टस चीक भाई द प्लेयर फॉर मिलान इस सीजन में इज नॉट अवेलेबल मोस्टली. तो देखते हैं हाउ फिट इज ही और नॉट. बट इधर वेज आई थिंक मिलान का वही बेस्ट पार्ट है ना, क्योंकि रिक्रूटमेंट जब होता है ना नया, यू ट्राई एंड क्रिएट पीपल और रादर गेट पीपल जो बैकअप्स भी यार, दे कैन डू अ जॉब फॉर श्योर. और इस बार लग रहा है यार कहीं ना कहीं मूसा और लॉफ्टस चीक आर काइंड ऑफ, आप इतना ऐसे नहीं बोल सकते, बहुत ह्यूज डिफरेंस है. आप रेंडर्स का बात करते हो, मतलब रेंडर्स एक्चुअली आप वीकेंड का गेम देखो अगेंस्ट लाजियो, डिस्पाइट बीइंग समवन जो डीप रहता है, ही समवन जो फाइनल थर्ड में भी जा रहा है. और वो मतलब मिलान को एक पियोली ने दिया एक थोड़ा सा कि यार यू गो फॉर इट. जैसे टोनाली फॉर इंस्टेंस यूज्ड टू बी, ऑफ कोर्स आप टोनाली को तो रिप्लेस नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जैसे टोनाली करता था, ही वाज मोर लाइक अ बॉक्स टू बॉक्स ऑलमोस्ट फॉर मिलान, राइट? वो एक चीज है जो आई एम सरप्राइज्ड, लेकिन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट इट हैपेंड. बट मैं यहाँ भी पढ़ रहा हूँ जी भाई, डॉर्टमंड का होम फॉर्म इन द चैंपियंस लीग इज एक्चुअली ग्रेट. हमें याद है चेल्सी फैंस रिमेंबर लास्ट सीजन अडेमी का गोल एंड ऑल दैट, लेकिन 15 गेम इन द चैंपियंस लीग इन द ग्रुप स्टेज दे हैव लॉस्ट जस्ट वन. वाओ, भाई दैट इज साहब, तो कैन ये इट बी बड़ी अ बात है सीजन भाई. फॉर डॉर्टमंड? क्वाइट पॉसिबली.
नहीं, इट डजंट मीन एनीथिंग अंकित भाई। अगर फुटबॉल सिर्फ होम गेम्स पे जीत के जीता जाता टाइटल, बड़ी टाइटल, तो फिर बड़ी बड़ी टीमों ने कर देना था। बट आई थिंक होम गेम से वी कांट रियली जज। यस, अगर वो यहाँ पे मिलान को हरा के एक बड़ा सरप्राइज कर देंगे तो ग्रुप में काफी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। बट देन अगेन डॉर्टमुंड का अवे फ्रॉम बहुत शॉकिंग रहता है। यू डोंट नो व्हिच डॉर्टमुंड विल अराइव, सो या, ऑलवेज अ प्रॉब्लम विद देम। 100%, 100%। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ गाइज अगेन, लेट्स ट्राई एंड स्टिक टू द टॉपिक। लाइक आई सेड, वी आर डिस्कसिंग ग्रुप एफ मैचेस फर्स्ट, बट विल डेफिनेटली कम टू ईच एंड एवरी मैच एज पॉसिबल। मैंने इतना बुंडेसलीगा नहीं देखा, कांट से डॉटमंड। लाइक बेसिकली आई थिंक जी भाई समड इट अप वेरी वेल, टू बी ऑनेस्ट। जनरल प्रसाद, लॉफ्टस-चीक ऑब्वियसली पोस्ट चेल्सी रिडेम्पशन। आई डोंट नो, मतलब इज इट अ थिंग? आई नो इज ऑफ टॉपिक एंड कल हम किए थे जी भाई आर लकी चार्म कमिंग इन द हाउस फॉर द वॉच अलोंग, बट जी भाई, ये द फैक्ट इज अ लॉट ऑफ मीडिया एंड इवन चेल्सी फैंस एडमिट कि यार लोग चेल्सी छोड़कर जब जाते हैं दे टेंड टू बी बेटर प्लेयर्स। अब इज इट अ केस ऑफ them going to other leagues and that league being simpler, or is it a case of Chelsea not giving them the freedom that probably they deserve? As in आई थिंक द Milan, लैटर वुड बी ट्रू। नॉट फ्रीडम, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने आप को वहां पे, एंड देन अ लॉट ऑफ critics and pressure काफी पड़े। I was just looking at this Oliver Giroud एक interview जो उसमें कह रहा था कि the pressure coming in from Arsenal to Chelsea was really different यार। yeah, You realize you're a top team over there, तो वहां पे pressure बहुत different होता है। I mean, just shifting teams in the Premier League, वो बंदा, he was talking about the pressure। तो uh, you have seen a lot of players, Pulisic as well, exactly, Harshad bhai, Pulisic has started to perform good. The thing is कि he wasn't that bad at Chelsea either. Uh, the thing is कि वो consistency नहीं दिखा पाया, and so हाँ, was उसको Ruben चांसेस भी Loftus-Cheek। नहीं दिए गए इन अ पर्टिकुलर चांसेस भी नहीं पोजीशन, मिले, इसलिए एग्जैक्टली। वो शायद नाखुश था टुकल से, बड़ी आयरॉनिकली। हजार्ड का उल्टा हुआ है, बिकॉज़ हजार्ड वाज ऑलरेडी सुपरस्टार इन चेल्सी ब्रो, तेजस्वी कम ऑन। या एवरी डे इज नॉट अ संडे भाई, होता है कभी ऑड वन आउट होता है, बट हजार्ड भाई हम तो प्यार करते हैं काफी। आई नो रियल मैड्रिड फैंस डोंट, दैट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू दिस गेम भाई, डॉर्टमुंड वर्सेस मिलान, सो गोइंग विद द मिलान अवे विक्ट्री, स्कोर लाइन एवरीवन। आई एम थिंकिंग यस अंकित भाई, मैं जा रहा हूँ फॉर मिलान। आई मीन डॉर्टमुंड ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट टीम टू बीट एट होम, जैसे आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड दिखाया है यहाँ पे। 15 मैचेस में होम पे एक ही लॉस है उनकी। इट कुड easily gone to be a draw। जैसे मैंने कहा, डॉर्टमुंड को स्कोरिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, दे टेंड टू स्कोर गोल्स। बट आई थिंक अगर मिलान डिफेंसिवली सॉलिड रहे ना, इफ दे आर एबल टू डिफेंड नैरो, कॉम्पैक्ट करे, फ्लैंक्स पे अच्छे से डिफेंडिंग करे, वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर थियो हर्नांडिस। इंपॉर्टेंट गेम फॉर हु वुड बी द डीएम आज। यासीन आटली खेलेंगे, ही हैज बीन इन गुड फॉर्म यार, रेवलेशन है काइंड ऑफ। तो या, गोइंग फॉर अ मिलान विन 2-1। मैं होप कर रहा हूँ, कुड इजीली बी 3-2, हाई स्कोरिंग गेम लग रहा है ये, बट या 2-1 फॉर मी आज। चलो भाई 2-1, और पुलिसिक एक्स डॉर्टमंड बॉय स्कोरिंग होपफुली लॉफ्टस चीक्स एब्सेंस जनरली। और देखते हैं भाई, टू बी ऑनेस्ट चुक्वेजी ना, ही इज गुड इनफ टू स्टार्ट इन माय ओपिनियन। मतलब बंदा काफी अच्छा लगता था इवन व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फॉर विलारियल विलारियल, या। बट या sometimes it happens. Dortmund 2-1, I think this is the popular scoreline, but वाओ। आचार्य बोले Dortmund 2-1, okay, that's interesting। काफी लोग बोले या Dortmund 2-1, 1-0 to Milan। चलो भाई, I think I'll be really surprised if we don't get a result. I mean, at least a draw. Matlab, it'll be a shock, almost as much as this group of death. Moving on to the big game of that group, by Newcastle versus PSG, the oil derby. लेकिन this match कहीं ना कहीं इंजरीज थोड़ा हुए हैं न्यूकासल में, बट न्यूकासल अगर बोलो तो फॉर्म टीम ऑफ यूरोप लग रही है। पीएसजी कहीं ना कहीं ऑन ऑफ तो लगी है, मतलब दे हैव लुक्ड रियली गुड एट टाइम्स, बट एट द सेम टाइम थोड़ा फ्लैट भी लगी है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला गेम में हमने देखा था अगेंस्ट डॉर्टमुंड, पीएसजी डिड वेरी वेल इन माय ओपिनियन, और वहां पर आई थिंक इफ आई रिमेंबर राइट 4-3-3 दे प्लेड। या मतलब इज दैट द बेस्ट फॉर्मेशन ऑफ पीएसजी, या गोइंग थ्री द बैक? क्योंकि इफ यू सी दे हैव प्लेयर्स लाइक स्क्रिनियर हु कुड एक्चुअली डू वेरी वेल इन दैट फॉर्मेशन। व्हाट इज द बेस्ट फॉर्मेशन पीएसजी के लिए? I think Ankit bhai, given ki Lucho is the guy जो कि prefers a 4-3-3 with wide wingers and with overlapping and underlapping fullbacks, and he has the profile of players जो कि ये कर सकते हैं उसके टीम में। I expect 4-3-3 would be good generally, but game to game काफी कुछ depend करता है कि you need a back three या फिर you need a two-man midfield। इस मैच के लिए particularly I think a three-man midfield would be better for PSG। They would be able to contain the ball in a better way, given कि Newcastle home पे and they have got intense pressing mechanism in the midfield operating through Gimares, Joelinton as well, जो कि शायद इस मैच से आउट रहेगा। बट या, डोंट अंडरएस्टिमेट एलियट एंडरसन यार, ही इज वेरी यंग एज वेल, बट टोनाली का रिटर्न है। सो या, आई थिंक मैच करना पड़ेगा उनको नंबर्स को, स्पेशली इन द मिडफील्ड, दे हैव टू रन द गेम। एंड डेफिनेटली अ लॉट ऑफ द गेम ऑफ पीएसजी डिपेंड
on pace. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele as well. तो flanks पे they have to be very aware of the threat. या Newcastle Trippier है या Dan Burn है या Target या Livramento could be on the left wing जैसे left back position जैसे हमने कल discuss किया. तो कहीं ना कहीं it would be a very good game. It's like a game जो कि you can't really predict. It's something can go either ways. Maybe एक new tournament bounce हो सकता है Newcastle के लिए, and they can get their first win over here, or else PSG can finally show what they are building under Lucho. They can Yeah. finally dismantle the team, and कहीं ना कहीं with the players जो PSG के पास है. Same thing for Chelsea as well. We criticize Chelsea a lot because by players काफी हैं, manager नया है, and they don't know what is happening. They are losing games on the trot. PSG का भी similar scenario. They are out of top 4, new manager, a lot of players, so nobody talks about them. But both of these teams are in the make with some good quality players. So with time, maybe ये They're match होगा building जहाँ a पे they will philosophy finally अभी show. वापस rebuilding a philosophy जिसे बोलते हैं ना, मतलब for these Absolutely, kind of yeah. teams. लेकिन हाँ, मतलब PSG हम तो भाई मतलब हंसी मजाक में लेते हैं with all due respect, especially after Messi left again. लेकिन देखिए आचार्य जो बोल रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि देखो when you talk about Newcastle ना, Newcastle is a team आप associate नहीं करते with conceding a lot of goals. In fact मतलब hardly any goals concede करती है. तो मतलब in a way if say for example सुनने में आ रहा है that Dortmund might be missing with that maybe उनको थोड़ा reshuffle करना पड़े जैसे हमने discuss किया with maybe Livramento coming in that full back position. अगर वो होता है in case they concede goals like sometimes we say कि कभी-कभी अच्छा एक result चाहिए होता है for you to kind of go on a run जैसे कल रात को हमने discuss किया था. But what about teams who actually concede नहीं कर रही and once they start conceding you never know, that will be the true test क्योंकि न्यूकासल हाँ 8 गोल स्कोर किए थे with 8 different scorers in Sheffield United, after that Milan 0-0. लेकिन अगर आप देखो अपार्ट फ्रॉम दैट गेम आई डोंट थिंक हम न्यूकासल को एसोसिएट करते हो लाइक विद स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स. आई डोंट थिंक गोल स्कोरर्स रियली, अ लॉट ऑफ कैलम विल्सन भी शायद मिसिंग होंगे आज. तो विद दैट मतलब डोंट यू थिंक दैट पीएसजी आर एक्चुअली हैविंग एन अपर हैंड क्योंकि गोल स्कोरर्स ज्यादा है. तो इफ कपल ऑफ गोल्स कम एंड न्यूकासल हैव टू बी वेरी केयरफुल स्पेशली एट होम जहां पर बहुत सालों बाद हो रहा है यूसीएल मैच. आई थिंक बिल्कुल अंकित भाई, but I think Newcastle is a team जो कि can shift in their approach. On a day they can score a lot of goals as well. We remember last year Almiron पगला गया था बीच में. And with Anthony Gordon, they've got someone who can drive the ball up pitch, who can score the goals, who can create as well. Isak is a very tremendous finisher. He can create for himself as well, very similar to what Kylian Mbappe can do. But yes, I'll agree कि भाई PSG के पास they have more goal scorers, better players up top with Kylian Mbappe अकेले. Dembele, you don't really know what you have to expect, but yeah, he can be very unpredictably good or unpredictably shit equally. But Newcastle on the other hand, yes, like I said, shift कर सकते हैं अपने approach को. They can be defensive, which I think इस match में they won't be. I think they'll be taking the game to PSG, और PSG under that intense press from the defenders जो कि they are very good. Obviously जैसे हमने बात किया last year, they considered one of the least goals. Pope अच्छे form में है. If the midfield clicks, if they're able to progress the ball in the final thirds in a quick transitional way, देरी नहीं की, lateral बहुत नहीं खेला, they are quick vertically in the progressions. I think क्योंकि PSG leave a lot of space, yes, but the team is built for the Champions League. PSG wants to win the Champions League this year, and that's what Lucho has been trying to do. So yeah, it could be incredible game यार, बहुत मजा आने वाला इस मैच में. बिल्कुल गाइस. तो न्यूकासल वर्सेस पीएसजी, सेंट जेम्स रोमांटिक एटमॉस्फेयर कि भाई पीएसजी शोइंग देयर हम हैं बड़े बच्चे अभी तो हो गए, अब तो बच्चे नहीं रहे. एम्बाप्पे का नहीं बोल सकते भाई, द टर्टल हैज ग्रोन अप. तो व्हाट इज द स्कोर लाइन प्रेडिक्शन एवरीवन, गो फॉर इट. एंड द मेन बैटल आपका देखना चाहते हो भाई. लेकिन हर्षित यहाँ पर याद दिला रहे भाई, सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को, डेफिनेटली हेल्प द स्ट्रीम एंड द algorithm, simple as that for the channels. Again shout out to bhai Z bhai as well as everyone watching here, absolutely helps 100%. लेकिन आई डोंट नो, मुझे लग रहा है दैट पीएसजी गेटिंग अ विक्ट्री फर्स्ट मैच डे में जी भाई. यहाँ पर क्योंकि सेंट जेम्स पार्क अवे परफॉर्मेंस, आई थिंक थोड़ा बहुत होल्डिंग वाला परफॉर्मेंस रहेगा इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स. आई डोंट थिंक दे विल कम आउट ऑफ द ब्लॉक्स. आई फील इट माइट बी लिटिल बिट मोर केजी गेम देन व्हाट वी एक्सपेक्ट. और शायद न्यूकासल विल बी एबल टू गेट अ ड्रॉ. मतलब न्यूकासल मतलब कलयुग आ गया जी भाई. न्यूकासल की हम बात कर रहे हैं भाई, दे आर डिफिकल्ट टू बीट न्यूकासल, बट इट्स एक्चुअली ट्रू. नहीं, it's good to talk about Newcastle यार in the Champions League for once. Even हम आर्सेनल पे भी आएंगे. These are the two teams. Well, मैंने जब से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया, मैंने न्यूकासल को तो नहीं देखा चैंपियंस लीग में, बट आर्सेनल वर ऑलवेज देयर. एंड पता नहीं क्या करते थे से साले, हमेशा बारसा के अगेंस्ट आ जाते थे और हमेशा पिला देते थे. सो या आर्मीनिया, उनका जो गोलकीपर अरमानी, क्या नाम था उसका, गोलकीपर जिसके अगेंस्ट मेसी ने 4 गोल पेले थे, ही लॉब्ड हिम इन एवरीथिंग. तो या दे यूज्ड टू गिव द स्केयर. या अल्मुनिया.
Armonia, yeah, तो Almunia, something like that. Almari करेक्ट। haramkhor. So हाँ, लेकिन yeah, न्यूकासल का मैं जरूर से हाँ बोलूंगा हाँ जी भाई, टू ऐड, बिकॉज अर्ली 2000 में हैविंग वॉच्ड देम अगेन, yeah एक ऐसी टीम थी उस समय, काइंड ऑफ चेल्सी, न्यूकासल, द टीम्स वो ऑलमोस्ट देयर वाला चीज, लेकिन वी यूज्ड हाँ टू ऑलवेज मिस आउट ऑन द चैंपियंस लीग, या रहते थे तो भाई वी यूज्ड टू जस्ट अबाउट गो देयर एज नंबर्स। वो अलग बात है कि बारसा ने हमें एलिमिनेट किया था 2000 सीजन में। आई रिमेंबर दैट, वो आयरॉनिकली वाज माय फर्स्ट लाइव चेल्सी चैंपियंस लीग oh गेम जो मैं भाई देख रहा था। साहब लेकिन हाँ, न्यूकासल कहीं उस समय पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर, हमेशा बिलो एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म की थी आई थिंक एट दैट परफॉर्म की लेवल, थी और कहीं ना कहीं देन दे लॉस्ट देयर वे। बट दिस न्यूकासल लुक्स वेरी डिफरेंट, या क्योंकि मेंटालिटी हैज चेंज्ड, एक कंटिन्यूटी है। प्रिडिक्शन आप पूछ रहे थे ना, आपने कहा ना दे करेक्ट। कैन गेट अ ड्रॉ, आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ अंकित भाई। जैसे आपने कहा ना, इट वोंट बी या अ वेरी ओपन गेम, मुझे नहीं लग रहा है कि इट वुड बी एज ओपन गेम एज द डॉर्टमुंड बेसी मिलान। आई कुड बी वेरी रॉन्ग, ऑब्वियसली दैट्स द फन अबाउट प्रेडिक्शंस, बट I think like Newcastle जीतेगी तो अच्छा लगेगा obviously, but it's not going to be easy for them. Like we are totally disregarding the class of PSG, the impact that Kylian Mbappe plays in the Champions League. बंदा he shows up man. जो जो करता है नहीं करता है, मेसी भी था वहाँ पे, like Kylian Mbappe was the guy in the Champions League for them more often than not. So yeah, they'll have to be aware, but it would be a very different experience for PSG out playing in the Champions League against एक English team जो अभी just आए हैं. So yeah, could be a draw, 1-1 draw हो सकता है. I think would be fair, 1-1 draw. या एब्सोल्युटली, जैसे लोग बोल रहे हैं चैट में, इट विल बी प्रॉपर मिडफील्ड वॉर फॉर श्योर, सो कहीं ना कहीं दे विल कैंसिल ईच अदर आउट, इज व्हाट वी आर आल्सो अस्यूमिंग मोर और लेस। उत्कर्ष क्या हाल है भाई, नाइस टू सी यू। हाँ भाई, डेफिनेटली यूनाइटेड के गेम पर भी आ रहे, लाइक आई सेड वी आर ट्राइंग टू डिस्कस ग्रुप बाय ग्रुप, तो थोड़ा सा ऑर्डर रहे इन द स्ट्रीम, सो दैट वी नॉट जंपिंग इन द काइंड ऑफ बायस नहीं कर रहे कहीं ना कहीं फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू टेकिंग। लेकिन हाँ, यूनाइटेड का विल कम इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, लेकिन लेट्स गो क्विकली ओवर ग्रुप ई प्रेडिक्शंस नेक्स्ट। यहाँ पर प्रेडिक्शन से ले लेंगे जल्दी से जी भाई। आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड आर प्लेइंग फायनूर्ड। हाँ फायनूर्ड अगेन, मतलब पीपल आर सेइंग कि दिस माइट बी द सीजन डच फुटबॉल, और कहीं ना कहीं दे हैव नॉट, आई थिंक दो seasons back to back, I think they were eliminated by Roma, one in the final of the Conference League if I remember right, and one obviously yeah Europa League last season. तो कहीं ना कहीं रोमा है उनकी मतलब पनौती इस बार, being in the Champions League, you think it might be one of them, क्योंकि Dutch football it's been a long time यार, Ajax के बाद में जो किया था Ajax ने उस season, crazy season we all remember, I don't think Dutch football has really stood up, have they, right? But at the same time Atletico Madrid अलग yeah football देखने को मिल रहा है, they are तो great, Ankit bhai. yeah, I'll bet what my has changed? money. What has Simeone has changed really tactically? Uh, well, I think एक point of time के बाद से Simeone was like, enough of this, let's go out and Hmm. play football. But if you think, if you actually watch them play, तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ चेंज हुआ है. Even don't get me wrong, guys. एथलेटिको मैड्रिड के पिछले साल मैंने कुछ मैचेस देखे एंड दे प्लेड ग्रेट फुटबॉल. वन टच क्विक बिल्डअप, वो एक ओवरलोड करना, एक साइड को बिल्डअप करना, फ्लैंक स्विच करना. दे वर शोइंग दिस इन पर्टिकुलर गेम्स. हम यूजुअली एक जनरल परसेप्शन रखते हैं ना एथलेटिको के लिए कि दे आर डिफेंसिव, बिकॉज बड़े मैचेस Hmm. में दे अप्रोच द गेम्स लाइक दैट, एंड कहीं ना कहीं दे हैव गॉट द सक्सेस. वी ऑल रिमेंबर लिवरपूल वाला मैच, वी ऑल रिमेंबर, आई थिंक Barca के against भी they played that way. Yeah. There were some games जहाँ पे वो top teams के against they go that way, and City के against we all remember how negative Yeah, football they played. City के वो Foden ने was a difference maker. If not, who Yeah, knows yeah, what would have अकेले. happened. Exactly. But is Sal, you will see he has given a bit more freedom to a few players with Lino in the wings area. I think he has got the ड्राइव. आई थिंक बहुत बड़ा हेल्प मिलती है उसको राइट हैंड साइड से विद मोलिना हु इज वेरी गुड अटैकिंग फुल बैक. ग्रिezmann इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम यार, एंड ग्रिezmann को वो फ्रीडम मिलता है, ही इज लाइक हैप्पी यार. ही इज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर. बंदा आता है पिच पे, ही इज डांसिंग, जोकिंग, हैविंग फन. पिच पे भी ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ एंड ही इज सच अ ब्रिलियंट गाय टू वॉच. मिडफील्ड में आई थिंक कोके ऑब्वियसली द रॉक इन द टीम, विट्सल के साथ जो बैक थ्री बनाते हैं इन द साउल सेंट्रल यार, डिफेंसिव साउल पोजीशन. कैसे बॉल कर रहा है? Saul. Exactly, he's balling on the wide area. So this team is changed. Yes, definitely. Aspilicueta obviously aate hain. This, talk about the mentality, talk about the leaders on the pitch, and they've got plenty. Even Hermoso is playing good. Gimenez is playing up there. अच्छी बात है कि Oblak is there. Last season वो injured थे काफी लंबे time तक. So they are doing very good. This match, man, I don't think so. They will lose. Feyenoord, big up, yeah, definitely. But Ajax, man, sorry, but Atletico Madrid, man, they are very good right now.
Yeah, probably Atletico Madrid लग रहा है कि यार they might be able to take this. और even भाई आप अगर मतलब talk about the group also if you are seeing मतलब I know Lazio ने interesting बना दिया था group को by getting that you know Providel का जो last minute goal था. But if you see अभी Lazio has not been impressive. I know फुटबॉल अच्छा खेलती है सारी की टीम्स Yeah. हमेशा मतलब आई डोंट थिंक वी कैन कंप्लेन दैट मच ऑन दिस फुटबॉल आई थिंक लेकिन काइंड ऑफ वेरी प्रेडिक्टेबल हो जाता है आई थिंक अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप I would have actually gone as मतलब फॉर्म के हिसाब से देखे तो एटलेटिको मैड्रिड एंड फाइनोर्ड ही तो मतलब इज दिस द मैच व्हिच डिटरमाइंस हु विल बी टॉप यू थिंक इट विल स्टिल बी लाजियो कमिंग अप I think Lazio को डाउट करने का कोई रीजन नहीं है. लास्ट ईयर दे वर वेरी गुड इन द सीरिया आ. दिस ईयर दे हैव नॉट स्टार्टेड द गेम्स लाइक दैट. Could be like dressing room problem या could be a mentality problem, but I do expect them to show up यार. 6 मैचेस अंकित भाई. ग्रुप जैसे मैंने कहा थोड़ा सा मुझे ओपन लग रहा है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप एंड बट आई स्टिल बिलीव कि एथलेटिको जिस फॉर्म में है वो अभी दे हैव शोन अस नो रीजन टू डाउट देम. So they would be topping if everything goes right. But yeah, if Lazio picks up and there would be games जिनमें they have to must win वाले matches होंगे. But I think yeah, if everything goes right, Atletico and Lazio for me. Still, I'll back Lazio ओके यार. But yeah, Feyenoord can surprise us. I would love to see Feyenoord there in the round 16. बिल्कुल बिल्कुल भाई आज आई थिंक जल्दी वाला मैच आज इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज ओनियन बर्लिन और ब्रागा और या बहुत साल्जबर्ग प्यारा और मैच है यार ये. रियल सोसिएडाड राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक बट विल कम टू दैट फॉर श्योर आई थिंक बारसा का कल जल्दी है राइट जी भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग कल जल्दी किक ऑफ है क्या बारसा का नहीं नहीं, आई बारसा बिलीव का भी सो सेम टाइम है आई लेट ही है थिंक. क्या अच्छा कोई नहीं या बट यस गाइस हर्षा को बिग अप भाई बिग अप टू हर्षा मानव अगेन आई कैन गिव शाउट आउट एवरीवन भाई लेकिन बिग अप टू द मेंबर्स एंड मॉड्स स्पेशली अगेन रिमेंबर वी आर वेरी क्लोज टू 11K एज वेल एज लेट्स गेट जीवा टू ग्रेटर हाइट्स एज वेल ऑन बोथ द चैनल्स ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स भी आज मुझे करना था फॉर पीपल आउट देयर मैंने प्रॉमिस किया था लेकिन बारिश हो गई यार बारिश मेरे हाथ में नहीं है क्रिकेट में ये होता है प्रॉब्लम कंपेयर टू फुटबॉल की बारिश हो जाती है मैच रुक जाता है तो वहां नहीं कर पाए ऑलमाइटी स्पोर्ट्स पर लेकिन कोई नहीं वहां पर भी आएंगे ऑन न्यूट्रल वॉच अलोंग ऑन फुटबॉल एज वेल पैब्लो बैरियोस यस लेकिन सेल्टिक वर्सेस लाजियो आई थिंक इज सेकंड मैच इन दिस ग्रुप यहाँ तो आई थिंक जीबा इज ऑलरेडी आंसर्ड गोइंग विद लाजियो आई एम अस्यूमिंग लेकिन यहाँ पर न्यूज आ रही है सेल्टिक की नहीं है लेकिन सेल्टिक की दुश्मन रेंजर्स फेवरेट्स seems like Lampard is linked to Rangers job या knowing how he should. Lampard did recently should He should. He should. restarting the career again huh Yeah, I Scotland में think yeah, he should. yeah He बिल्कुल should. बिल्कुल I think everyone is going with Lazio I'm assuming नहीं यार everyone let's get in your score predictions for Celtic versus Lazio as well चलो भाई let's move on to group G लाइप्सिग वर्सेस मैन सिटी अब लाइप्सिग मैन सिटी मतलब हर रोज मिलते हैं ऐसे ऑलमोस्ट लगता है मुझे तो एवरी सीजन होना ही है मैच आजकल तो बट अब लाइप्सिग नो द फैक्ट इज लास्ट सीजन दे लॉस्ट दैट चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 टाइम अगेंस्ट मैन सिटी इट वाज अ प्रॉपर मॉलिंग बाय हालैंड इन पर्टिकुलर Eh, 5-0 लेकिन कमिंग ऑफ दैट ड्रॉ अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख कॉन्फिडेंस तो होगा और लाइप्सिग में मतलब द फैक्ट इज अभी नाउ दे हैव आई थिंक ओपेंडा है वहां पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग Openda है या. हाँ तो लाइप्सिग में जनरली मतलब व्हाट इज द बेस्ट वे टू बीट मैन सिटी स्पेशली अब रॉड्री वापस आ रहा है मैन सिटी के मिडफील्ड में इज देयर अ वे व्हाट इज द बेस्ट वे Uh, क्योंकि दो बैक टू बैक लॉसेस हुए मैन सिटी का श्योर दैट कुछ तो फिगर आउट हुआ होगा I think Ankit bhai, like you can't just judge Man City like that. दो matches भी हारे हैं ना तो फिर it's okay for them. It's okay for them. They'll bounce back. Rodri is back in the team. City will always find a way. There are times in the season जब आप एक थोड़ा सा gloomy patch पे होते हो, but top teams like City, obviously with a manager like Pep Guardiola with the depth like that, obviously they will come out of it. We have to remember कि यार उनकी team में काफी players missing है. KDB, one of their best players, is out, and Bernardo hasn't been playing. So टीम थोड़ी सी शफल भी हुई है. वी ऑल गिव टाइम्स टू अदर टीम्स टू अडैप्ट एंड टू जेल टुगेदर इन द सीजन, बट वी एक्सपेक्ट टीम्स लाइक सिटी, ऑब्वियसली मैड्रिड, बार्सिलोना, इनको हम टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं विद द न्यू सीजन विद द न्यू प्लेयर्स. बट या, सिटी ऑन द अदर हैंड, आई थिंक ये मैच, it's an important game for them. Don't feel like it's a dead rubber. Don't feel like it's like gonna be a 7-1 or something. I think they'll have to contain the ball better because Leipzig is a different team. Is bar they will fight for the ball every single time. They will go for the second balls. Intense press hoga, and City will just need to get on their rhythm. एक बार City will find the rhythm, then it could be over for Leipzig because they don't sit back and defend. They will come out you, and if you leave the space for City, they'll destroy you. So yeah, yes, it could be a difficult game for Leipzig, but मजा आएगा इस मैच में भी. It's gonna be good.
Puneet has updated that Bernardo and John Stones are back in training and Leipzig have injuries. Okay, तो भाई या here is टीमो your वर्नर answer नहीं है, basically. या टीमो Wow. वर्नर नहीं So, उनके पास, आई थिंक एक और प्लेयर, दो प्लेयर मिसिंग है, बट या तो I think probably it's a given. लेकिन वही है, it's an away game, तो it's a Champions League night, तो one can never take them easily as well. लेकिन हाँ, I think I'll go with that as well. Scoreline मतलब it will not be a drubbing, will it? नो आई डोंट थिंक सो ड्रॉपिंग होगा. आई स्टिल वांट टू गो फॉर मैनचेस्टर सिटी, अंकित भाई. पता नहीं, मतलब रीजन नहीं है टू डाउट देम. यस, दे हैव लॉस्ट 2 games ऑन द रन, बट चैंपियंस लीग मैन, दे हैव टू बी वेरी सीरियस. एंड हमने देखा उनको, क्वालिटी विल ऑलवेज सर्वाइव एंड दे हैव इमेंस क्वालिटी. सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि दे विल गेट अ विन. 3-1 या 3-2 समथिंग. 3-2 आई फील लाइक लाइप्जिग भी स्कोर करेगी, मुझे ऐसा फील आ रहा है, बिकॉज जावी सिमोन मैन, सो गुड, and they can surprise them. So it could be either 2-1 win for City. I'm going for a City win basically. Scoreline मैं ऐसे guess तो नहीं कर याद पाऊंगा, है but वो yeah. लास्ट सीजन था ना जब इंकुंकू वाज इन Yeah. लाइप्जिग, भाई मतलब 6-3. 5-3 हुआ था, 6-3 या 6-3, क्रेजी Yeah. गेम हुआ था. मतलब आई रिमेंबर दैट वाज वन ऑफ दोस गेम्स. तो मतलब अगर वैसा हो गया तो मजा आ जाए यार, एब्सोल्युटली. बट हाँ, टीमो वर्नर होके भी ज्यादा कुछ नहीं करता भाई. हर्षित देखो, मैं भी बहुत बोला है टीमो वर्नर, मैं तो बोला हूँ यार डायरेक्टली वाज अ फ्रॉड एट चेल्सी इन द प्रीमियर लीग. लेकिन चैंपियंस लीग में आई थिंक ही हैड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नाइट्स इन चैंपियंस लीग भाई इन हिज करियर, इफ यू रियली आस्क मी. Timo Werner in the Champions League. I know City, you cannot kind of beat the defense easily, but let's be real, bhai. Timo Werner was there in the side of Chelsea beating City in the finals of the Champions League. वो तो डालना ही था. लेकिन having said that, he had some great appearances. I think he is a miss for Leipzig for sure. 4-2, 3-1 to City बोल रहे, 1-0 Leipzig last minute banger. Wow, that's interesting. 3-1 to City बोल रहे उत्कर्ष अपने. Pep is always trying something new, trying something with different players. Remember, few number of players have left. I think ये बॉब जो आया है ना, मतलब यंगस्टर, आई थिंक Oscar ही इज Bob. लुकिंग ऑलरेडी एक डिफरेंस मेकर है पिच पर. तो काफी लोग Absolutely. कल आफ्टर चेल्सी के पामर का परफॉर्मेंस बोल रहे थे यार, पामर को नहीं जाने देना था, बट सिटी की एकेडमी भी बहुत अच्छी है. आई डोंट थिंक देयर इज एन इश्यू. आई एम प्रीटी श्योर उनका भी प्लान भी होगा कमिंग अप द इयर्स. 2-1 टू सिटी भाई, ज्यादा लोग वही जा रहे हैं, वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग फॉर अ शॉक यहाँ पर. चलो भाई, नेक्स्ट वन आ जाते हैं यहाँ पर. लेट्स टॉक अबाउट बारसा के ग्रुप. भाई साहब, पोर्टो, Eesh. पेपे खेलना यार. एक तो मैं एज ए न्यूट्रल आई वुड लाइक टू सी पेपे टू प्ले. आई नो दैट सुनने में आ रहा है ही मे नॉट बी 100% फिट, बट हाँ, पेपे maybe. शायद वो हैज ही प्लेड अगेंस्ट बारसा आफ्टर लीविंग मैड्रिड? आई डोंट थिंक सो. नहीं, आई थिंक दिस इज द नहीं, फर्स्ट नहीं, टाइम. नहीं, वाओ. नहीं. तो लास्ट वीकेंड रामोस, अभी पेपे की टीम. आई नो पोर्टो आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट कंपेयर टू जो प्रीवियस सीजन में थे, बट बारसा की पहले बात करते जी भाई. मतलब कहीं ना कहीं वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, जैसे एथलेटिको के बारे में बोल रहे थे, बारसा लास्ट सीजन, आई नो डिस्पाइट विनिंग द लीग आप इतने ज्यादा खुश नहीं थे काइंड ऑफ फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड, स्पेशली मिडवे थ्रू द सीजन. इस बार क्या टैक्टिकल चेंज हुआ है कि जस्ट द फैक्ट दैट आपने एक लीग जीता है, दीस गाइस हैव बिकम मोर एक्सपीरियंस्ड? व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम बारसा's पर्सपेक्टिव? इतना अच्छा क्यों लग रहा है? Well, there have been games जहाँ पे लोगों को अच्छा नहीं लगा है, and it is because people are demanding. They always want Barca to score those 3 goals, 4 goals, 5 goals. हमें 4 होना चाहिए, हमें 5 होना चाहिए, हमें 1 होना नहीं चाहिए, और ना ही हमें रेफरी होना चाहिए भाई, ठीक है ना, हरामखोर, बदतमीजी नहीं. But jokes aside, बिल्कुल सही अंकित भाई. Tactical change आए हैं. The team has become much more depth in keeping the ball. They've got multiple players who can find ways to retain the possession. Cancelo has added a different layer to Barcelona build up play. हम goals भी इसीलिए concede कर रहे हैं. I made up a video talking about क्यों हम goal concede कर रहे हैं. उसका simple एक liner है कि यार हमारा approach change हुआ है. Back 3 से पिछले साल से we have gone on playing two full backs जो कि attacking nature के हैं. Obviously Balde becomes the winger और Cancelo inverts in the midfield. So there are spaces जो कि opposition attack करती है, and we become a bit more susceptible to the counter attacks. But still, the most important thing is कि you have to sacrifice a little bit of defensive solidity to be more flamboyant and to create something more on the pitch. And with Cancelo and with Felix, you do that. Obviously, with Pedri coming in the team, he has to start. No doubts. अगर Pedri fit है, fine है, he will be starting in the games. And यहाँ पे we'll have to find a very big answer to. फिर कौन बचेगा? बाकी will it be आपका Felix या Gundogan or whoever. So for now, there have been tactical changes, and Cancelo has been a big part of it. Aurel Romeu has been our best signing abhi tak, because we all know what Gundogan would do. We didn't know what Aurel Romeu would do, but I kind of predicted it in my previous videos as well. Ki Romeu would change Barcelona. The system is very well suited for him. एक simple football खेलने वाला बंदा who is disruptive in nature and who could still
play for others. Romeo is a guy जो दूसरों के लिए खेलता है. He plays football for his teammates, and that is absolutely wonderful. And you love a guy like that in your team. And very simple, 3 million euros भी नहीं लगे उसके लिए. And I think change हुई है Barca. Yes, they have become much more attacking. Yamal, wow. But sadly, injuries again. Rafinha is also out, man. Yeah, Rafinha is out. लेकिन I think that means obviously Yamal will start. मतलब what is your starting lineup? सब लोग chat में भी बोलिए against Porto away, considering that it's a busy month as well. Generally speaking, with the international break also coming up, तो क्या क्या बोल रहे हैं? मतलब what should थोड़ा rotation होगा कि Porto आप chance नहीं लेना चाहोगे? First match day में 5-0 was very convincing. Let's be real, as much as it was hand to up. मतलब would you change something? मैं तो बोलता हूँ भाई, क्या Fermin Lopez भाई, he's been very impressive. Fermin Lopez has been very impressive as well. मैं बोलूंगा मतलब is it a time to give him a chance or you think नहीं standard खेलेंगे? आपकी क्या होगी midfield and forward line especially? De Jong out है, Pedri out है, Rafinha out है. अगर Rafinha होते, I would have used him in that number 10 वाले रोल में जिसमें पिछले मैच में वो खेला था. बट इस मैच में I kind of believe कि he would start. तो वो जो बॉक्स बनेगा हमारा, Romeo, Gundogan deep. I love Gundogan when he's deep. This would be ये जो लाइन मैंने बोली, ये बहुत weird लगेगी if people don't know the footballing sense of it. but hoping you got the point. Romeo and Gundogan will have to play. Fermin up top and by Felix will be there, and wide पे Yamal को मैं फेंक दूंगा. So mid यही रहेगी. Back में I'm gonna play Araujo, Kunde and Christensen. मैं Cancelo को लेफ्ट विंग बैक वाले रोल में खिलाऊंगा जहाँ पे बेसिकली बाल्डे खेलता है. एंड ये छोटी सी चीज़ें जो मैं चेंज करूँगा इस मैच में. बाल्डे थोड़ा सा ओवर रन हो चुका है. ही नीड्स टू बी शोन हिज प्लेस. ऑब्वियसली ही नीड्स टू इम्प्रूव. तो या भाई लेकिन एक बात बताओ आप, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सर्जी रोबर्टो को क्लब कैप्टन क्यों बनाया यार फिर? बेचारा बेचारा कोई, आई एम नॉट हर्ड अ सिंगल बारसा प्लेयर प्रेज हिम और गेटिंग हिम इन लाइनअप्स. क्यों यार? मतलब ही इज क्लब कैप्टन. यार अगेंस्ट वही पोर्टो तो बात है कर अंकित सकता भाई. है, कम ऑन. Why? नहीं, nobody would want to have a Sergio Roberto starting in the games. He's just the guy जो कि he's earning very less. अभी उसने अपनी wage कम कर रखी. He's an example to lead by in the club like Barcelona. He's an example for everyone. मुझे लगता है the reason he's there is to be an example, and people should look up to him. Actually जितना हम उसको जो बात करते हैं ना कि रोबर्टो ऐसा है वैसा है, बट he has always been a very important workhorse for Barcelona, one of the most versatile players. Yes, he has shown his defensive vulnerabilities. हम उसको बहुत पसंद नहीं करते, but he has made some difference in some important matches, and he's the club captain here. It's not like we will miss him a lot, but yes, he's like एक fine line है हमारे लिए. When कुछ players out रहेंगे, he'll come in and play. But Ter Stegen, man, he's doing terrific. He's my guy, definitely. And yes, I will start Gavi यार. मैंने बोला नहीं क्या? अच्छा, फर्मिन लोपेज गावी, बोल दिया था मैंने. ओके, वही हमने फर्मिन गावी. लोपेज वर्सेस गावी है. लेकिन गावी हाँ, खेलेगा, यू थिंक सो? ओके, गावी आई प्रॉब्ली थिंक या. गावी आई थिंक लेकिन फर्मिन लोपेज को डेफिनेटली आई थिंक ही इज इम्प्रेस्ड इनफ टू बी देयर प्रॉपर. मतलब अब टीम में आ गया. आई थिंक, आई डोंट थिंक देयर इज अ डिस्कशन इवन. आई डोंट थिंक इट्स अ इफ्स एंड बट्स वाला मामला. लेकिन हाँ, आर्सेनल पर भी आएंगे डेफिनेटली, हालैंड एंड एवरीवन एल्स. यस, आई कैन सी सम मैनचेस्टर यूनाइटेड क्वेश्चंस अगेन. गाइस, ट्राई स्टिक टू द टॉपिक बिकॉज हम हर एक ग्रुप वाइज जा रहे हैं, हर एक मैच वाइज जा रहे हैं, तो विल ट्राई एंड डू दैट जैसे मैंने यहाँ पर बोलने की कोशिश की है सब लोग. एंड यस, बिग अप टू द मॉड्स, मेंबर्स एंड एवरी सब्सक्राइबर. सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए. और यस, लेट्स गेट इन योर प्रेडिक्शंस. पोर्टो वर्सेस बारसा. ऑफ कोर्स यहाँ पर लामिन यमाल भाई, आई थिंक लास्ट मैच में ही बिकेम द यंगेस्ट आफ्टर मुकुकू, और वाज इट इवन मुकुकू का ब्रेक कर दिया था? मुकुकू जस्ट बाद था सेकंड यंगेस्ट प्लेयर एवर सेकंड टू यंगेस्ट. फीचर. सेकंड यंगेस्ट, या. भाई मैं तो आई एम अ ह्यूज फैन यार. मतलब गावी का भी फैन था, नॉट दैट आई वाज बारसा फैन, आई हैव टू पुट दैट फर्स्ट. लेकिन डेफिनेटली मैं बोलता हूँ गावी, अराहो और लमीन यमाल भाई, ये तीन बंदे ना, एंड पेड्री तो ऑफ कोर्स है. ये मतलब दैट इज सम फ्यूचर दिख रहा है यार बारसा का. इज वेरी सिक्योर. तो लमीन सीरियसली. यमाल स्कोरिंग, आई एम सेइंग यार, Oof, 2-0 अवे will be विक्ट्री, there. यू विल बी हैप्पी. और आप जा रहे हो मोर कन्विंसिंग? नहीं, आई थिंक इतना ओपन नहीं रहेगा. पोर्टो ऑब्वियसली मिसिंग आउट प्लेयर्स, बट करेक्ट. पोर्टो इज अ वेरी डिफिकल्ट टीम टू प्ले अवे. स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा हवा में उड़ना नहीं चाहूँगा. आई नो वेयर व्हाट माय टीम कैन डू. आई नो वेयर दे लैक एंड स्टफ, बट या, आई ट्रस्ट माय टीम. इट्स गोना बी अ विन यार. विन के लिए मैं जाऊँगा. बट आई थिंक पोर्टो माइट स्कोर अ गोल. वी हैव ऑफन लेड सम ऑड गोल्स, अंकित भाई. डिफेंसिवली वी हैव बीन ऑफन सॉलिड रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. इट्स नॉट लाइक ये टीम अटैक करती है एवरी टाइम वी आर लाइक अरे भाई गोल पड़ जाएगा, ऐसा जो हमारा 2 साल पहले था सिनेरियो. इट्स नॉट लाइक दैट. वी नो हाँ भाई दे विल बी फेसेस जहाँ पे वो अटैक करेगी, बट वी आर गुड इनफ, केपेबल इनफ नाउ कि वी विल डिफेंड हिम. तो दैट्स द थिंग. बट एक गोल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ.
So could be a 2-1 win for Barca, but I would definitely love a 3-1 win. Yeah. दीप कम ऑन यार, कम ऑन, वी कैन डू बेटर। ओन गोल भी प्रेडिक्ट कर दिया आपने, वाओ। बट कोई नहीं। एंड यस नीलेश, मैंने देखा आपका, विल कम टू द नापोली एंड रियल मैड्रिड बिग गेम, बट ऑफ कोर्स नीलेश, हम उस पर भी बात करेंगे फॉर श्योर। लेकिन देखते यार, भाई ये जो है ना, ये Oh, बंदा, आई थिंक गुंडोगन ने बोला है उसके बारे में दैट ही इज डेफिनेटली दैट लेवल। मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो बिकॉज यू मिस्ड आउट ऑन आर्दा गुलर, दैट इज व्हाई यू हैव गॉन फॉर mm, हिम, इज व्हाट आई एम अस्यूमिंग। नहीं, सिमिलर yeah. प्लेयर लगा मुझे फ्रॉम द लिटिल Mm. क्लिप्स मैंने देखा है। बट आई थिंक डेफिनेटली हसीब, दैट्स अ गुड शाउट आउट फॉर श्योर। अब देखते हैं वेदर he'll get some opportunities very soon. I think Vitor okay coming in January, बहुत टाइम बाकी नहीं है, हम remember भूल that. जाते हैं अक्सर, पता है, हम अक्सर भूल दैट विल जाते हैं कि बी यार भाई हमको विटर साहब, रॉके आई एम मैन। ऑलरेडी जेलस यार, जी भाई मैं तो बोलता डायरेक्टली। यार अंकित भाई, उत्कर्ष आप बेगम, जलस मत हो यार, आप पास ऑलरेडी 75,000 प्लेयर्स है। हैव यू हमको सीन हर योर एक प्लेयर प्लेयर चाहिए। डेनियल डेनियल वॉशिंगटन, जो अपकमिंग या स्ट्राइकर है ना चेल्सी में? या ही इज अरे डेफिनेटली यार, देयर। लीथल इनफ मैन, कांट वेट एक्चुअली टू सी हिम ब्राजील प्ले मैन। जनरली ना, आप देखो विटर ओके है ही वहां पर, अपना एंड्रिक, एंड्रिक एज वेल एज, द या डेंजल वॉशिंगटन की बात हो रही है, वॉशिंगटन, मतलब काफी सैंटोस। Santos in midfield, of course. Utkarsh Abure, do you think Barca will be able to reach semi-finals at least? Love to hear Zebai's analysis of teams. You both two of my favorite YouTubers, and Utkarsh, you're one of our favorite as well. Absolutely, bro. Big up to you for being a member for 2 months and hope ever. लेकिन क्या बोलते हो यार मर्जी भाई? Of course ये depends on the draw and all that. लेकिन आई थिंक लास्ट मैच डे के पहले भी पूछा था आपसे, आपने बोला था भाई पहले राउंड ऑफ 16 बोले थे बिफोर द चैंपियंस लीग बिगन, देन वन मैच डे यू सेड क्वार्टर फाइनल्स क्वार्टर्स। तक नहीं जाएंगे तो डिसअपॉइंट होंगे। बट अभी, हाँ। क्योंकि जो पहला क्वेश्चन पूछा था ग्रुप। हिस्ट्री में, आई थिंक बारसा लग रही है टॉप, मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस इन द यूरोप टॉप 5 लीग्स में, अमंग द टॉप 4 बेस्ट टीम्स तो लग रही है, पुट इट दैट वे। या अंकित भाई, बस यही बात होती है ना कि लाइक the opinion changed too quickly for teams like these, and जो season जो हमारे साथ हुआ है, एक fall आता है हमारा, and it gets back to basics, get back to square one, and हम फिर वही lament करने लग जाते हैं। But I think ये सीजन हो सकता है जहाँ से रियली वी स्टार्ट टू कैच अप, एंड यार बहुत पता नहीं, बहुत वियर्ड फील होता है, लाइक फॉर एवरी टॉप मैच डेज, एवरी बिग मैच डेज, ये प्लेयर इंजरी वाला जो है ना यार चीज, ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है यार। लाइक आई एम कंसर्न्ड विद द इंजरी ऑफ पेद्री यार, वेरी ट्रू पुनीत। I'm absolutely concerned about how quickly ये बंदा injured होता है, but it's not just him. There are other players in the team जो कि regular injuries ले लेते हैं, रोहो as well एक उनमें से है। I don't know problem क्या है। अगर बार्सिलोना, अंकित भाई, पता है, fit रहे ना, if they have De Jong, if they had Pedri, Gundogan provides in so much class quality in the team यार। If we have the right players at the right time यार, हमारे पास वो players fit रहे ना, तो I do see the team has got the traits to now with Cancelo in the team and Felix के एक और additions के साथ to challenge, and I think क्वार्टर फाइनल तक तो मैं डेफिनेटली अभी देख रहा हूँ बारसा को जाते हुए, एंड देन फ्रॉम वहां से एनीथिंग कैन हैपन, वंस यू Yeah, आर of course it देयर depends on the luck of the विनिंग। draw and on the night, वो तो है ही खैर। एब्सोल्युटली या। वो डेफिनेटली है, बट आई लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट गाइस। ऑफ कोर्स दूसरा मैच उसका है एंटवर्प वर्सेस शाख्तार। ऑल्डरवेल्ड आके बहुत बड़े बड़े चीज बोले हैं। अंकित भाई जस्ट एक सेकंड, चीज मुझे याद आ गई, पोर्तो पे यू विल गेट टू सी एलन वलेरा, वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट गाइज, जो राइट राइट राइट। डीएम रोल्स काफी टीम्स आउट कर रही थी, बट ही चोज पोर्टो, बहुत बेसिकली बड़ी एंजो साइनिंग का है। रिप्लेसमेंट वही निको, था, इफ आई रिमेम्बर या राइट। या एनजो, एनजो व्हाट दे नहीं, वर ट्राइंग यहाँ पर, नहीं व्हाट हाँ बेंफिका लाइक वर ट्राइंग। पोर्तो राइट, पोर्तो, बेनफिका बट गॉट बेंफिका, कोकचू, हाँ दे गॉट बेनफिका कोकचू, गॉट बट दे वर एक्चुअली ट्राइंग फॉर कोकचू। वरेला। ओके राइट। ओके, राइट राइट, हाँ हाँ, ओके ठीक है, ये नहीं पता था मुझे, फाइन। तो दे गॉट कोकचू एज वेल, मुझे लगता है कि दे गॉट आई थिंक बेटर प्लेयर थोड़ा सा, गिवन द क्वालिटी ऑफ द कैंपेन्स ही हैज प्लेड इन, बट ये एलन वेरेला को देखने में मजा आएगा। हैव सीन हिम अ लॉट यार लेटली, और निको गोंजालेस एज वेल, हमारे ही बंदा वहां पे है, सो या दैट आल्सो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेल सेड देयर। एंटवर्प 1-0 टू शाख्तार भाई। ऑल्डरवेल्ड बड़े बड़े चीज बोल रहे हैं, शाख्तार एक्चुअली गोल्स करती है हर्षा। क्विक प्रेडिक्शन ले लेते हैं इसका जी भाई, मतलब कहीं ना कहीं दे आर प्लेइंग फ्रॉम दैट थर्ड स्पॉट, लेट्स बी रियल अबाउट इट। तो शाख्तार को बैक करोगे बिकॉज ऑफ द यूरोपियन एक्सपीरियंस पेडिग्री दे हैव, और यू थिंक कि एंटवर्प वाज जस्ट हैविंग अ बैड नाइट अदर डे, दे डोंट स्कोर इनफ गोल्स फॉलो। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक I'm not very well suited to talk about Antwerp.
बहुत देखा नहीं इनको, बट या व्हाट द कन्वर्सेशन हैज बीन गोइंग ऑन, या जितना मैंने स्टडी किया है, रिसर्च किया, उस हिसाब से आई फील लाइक कि दे आर डिसेंट इनफ साइड. होम एटमॉस्फेयर वुड बी वेरी क्रेजी, बट या शक्तार को, I think Shakhtar has got more experience in this tournament, but you never know. Yeah, Odd nights happen, but my money would be on Shakhtar, yaar. 2-1, same here. 2-1. I'm going for Shakhtar. एक goal शायद मारते, but 2-1 for me. चलो कूल है भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप. और भाई काफी देर हो गया बट मैनचेस्टर यूनाइटेड, नापोली, रियल मैड्रिड की बातें नहीं हुई. यस एब्सोल्युटली वी हैव टू डू दैट. मैनचेस्टर यूनाइटेड के ग्रुप से शुरू करते हैं. ग्रुप ए, विल कम बैक टू ग्रुप ए, गोइंग विद द सीक्वेंशियल ऑर्डर गाइस. हम कर दिए अभी तक उनसे, आई थिंक वी हैव डन EFGH इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या EFGH हो गया है एंड नाउ वी आर मूविंग टू ग्रुप ए. Man City, Manchester United versus Galatasaray. Manchester United, people are already saying अगर जीतते नहीं अगेंस्ट Galatasaray, ETH out and what not. मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जी भाई. मतलब should ETH take the main blame क्योंकि he plays hard ball in terms of off the pitch issues. मतलब कहीं ना कहीं वो hate अपने आप के लिए, is he attracting that or you're saying नहीं, it's just a bad face for Manchester United. उनकी जो रिक्रूटमेंट है, यू आर सैटिस्फाइड? क्या लगता है, मतलब ये मैच में तो डेफिनेटली दे शुड बीट गैलेटासराय, राइट, डिस्पाइट द फॉर्म. हर मैच एक चांस है फॉर ETH टू शोकेस व्हाट ही वांट्स टू डू विद द टीम, बट थोड़ा सा एक अनलकी फैक्टर भी है जो मैनचेस्टर के साथ चल रहा है. लॉट ऑफ इंजरीज मैन, लॉट ऑफ इंजरीज. प्लेयर्स फाइनली हैव स्टार्टेड टू रिटर्न. रेगुलॉन मोस्ट प्रोबब्ली 2 वीक्स 3 वीक्स में आ जाएंगे, बट I think the senior players will have to step up, man. Rashford can't go on hiding. I think he has to step up and now, because वही है ना, हम कल डिस्कस कर रहे थे कि he is the main guy. He is the guy that brings the goal. पिछले साल वही वो बंदा था. और Haaland definitely is there now, but nobody is feeding the ball to Haaland. पिछले मैच में he had what, like 22 touches, so it's not good enough. Bruno should play closer to Haaland. वो बहुत deep चल जाता है, and the blame is on Erik ten Hag, Ankit bhai, because but the players will have to be taking the blame as well. मेरे ओपिनियन में लाइक इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट गेम फॉर यूनाइटेड. अगर वो सोच रहे हैं कि इट्स इजी कि ओटी पे है एंड दे कैन विन इट, बट क्रिस्टल पैलेस वाले गेम से काफी इश्यूज उनके हमें दिखे. एंड या डेफिनेटली गैलातासराय हैव इम्प्रूव्ड. टीम काफी उनकी क्वालिटी आ चुकी है, बट I expect United to do good in this game, Ankit bhai. To be honest, But there's a I'm familiarity. expecting आप them. देखो तो Ziyech, Zaha, मतलब these are people who know United for sure pretty well. Yeah, At the same time वो goals तो करते हैं, लेकिन वही है, डिफेंस पर भी डिपेंड करता है, स्पेशली इन defensively, ओटी. yeah. जहा ने बोला है दैट, मतलब यू थिंक आई एम बॉदर्ड, मतलब द गाय दैट ही स्पीक्स एज एन ही स्पीक्स, वो तो ऐसे ही यार. वो इंटरव्यू में पूछा है कि यार व्हाट अबाउट योर स्पेल एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये वो. भाई बाय द वे ही वाज अ क्रिस्टल पैलेस प्लेयर एज वेल, पीपल फॉरगेट. जो प्रीमियर लीग में भाई इतने बार खेला यूनाइटेड के साथ. जो हमने बात ही किया अबाउट ओरियल रोमेयो, काइंड ऑफ वी एसोसिएट हिम विद बार्सा, चेल्सी. लोग भूल जाते हैं साउथहैम्पटन में ही वाज वन ऑफ द मेन गाइज. तो जहा हैज बीन वन ऑफ द मेन गाइज इन क्रिस्टल पैलेस. आई डोंट थिंक वो ऐसा देखता होगा. मतलब डू यू सी ही हैज समथिंग टू प्रूव? मतलब ज़ाहा इज अ प्लेयर, और कहीं ना कहीं मैं तो डिसअपॉइंट हो रहा था. मैं सोचा यार ही कुड गो टू वन ऑफ द टॉप क्लब्स. व्हाट डू यू थिंक वाज द प्रॉब्लम देयर? Yeah, a lot of people said कि Zaha free है, Zaha को बारसा पिला दो. I was like, भाई, are you kidding me? Like, he's good enough यार. मतलब ठीक है, decent enough है, better than decent है अंकित भाई. But for a Crystal Palace team, he was like the best player. So करेक्ट. seriously, like he could have gone on to other teams. There would have been teams who could have played him, but maybe age फैक्टर हो सकता है, मे बी कंसिस्टेंसी फैक्टर हो सकता है, मे बी एटीट्यूड हो सकता है. यार द थिंग इज कि पीपल डोंट नो दैट कि जब एक टीम एक प्लेयर को साइन करती है, दे जस्ट डोंट साइन हिम बिकॉज वो प्लेयर अच्छा है. दे चेक आउट कि भाई हाउ ही इज, उसका एटीट्यूड क्या है, हाउ गेट्स अलोंग विद द प्लेयर्स एज वेल. तो एक पूरा डेटा साइंस लगा होता है दैट मेजर्स हिज एट्रीब्यूट्स, हिज रिएक्शंस, उसका एल्गोरिथम पूरा मैच करते हैं, स्टफ लाइक दैट. वो बेसिक वो अलग चीज है, बट या ही हैज द क्वालिटी टू प्ले इन टॉप टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल. But seriously, he went to Galatasaray. मतलब, he just wants to enjoy his football over there, and they are winning, and they are in a very good time. So yes, good for him, man. ठीक है, भाई मजा अभी आएगा. अभी मैं रीड कर रहा हूँ. Galatasaray have just lost one of the last 19 UEFA club competition matches. Wow. That's something. चैंपियंस लीग में नहीं होगा, वो अलग बात है, इसलिए दे Yeah, UEFA. नाइसली टर्म दैट टू काइंड ऑफ मेक इट इंटरेस्टिंग. मीडिया आप जानते ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक लाइटली नहीं ले सकते. बट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफी मैचेस एट होम होंगे गैलेटासरे में. द एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट, सो आई कैन एक्चुअली सेंस कि इट माइट बी अ हाई स्कोरिंग वन. लेकिन ओटी
as much as United back to back games हारी है, there was a good 30 odd games जब वो जीते जीते रही थी. I think probably it might be the change, especially with Anthony back. क्या देखते हो? Should they start with Anthony, considering that अभी वो train भी कर लिया etc. या आप देखते हो Bruno Fernandes being on the rightish side? What is better for them? इट डिपेंड्स कि मिड में क्या हो रहा है. आई थिंक नाउ क्योंकि अमरबात लेफ्ट बैक खेल रहा है, ही कैन इन्वर्ट इन द मिड. तो अमरबात, कैसेमेरो एंड ब्रूनो आर इनफ इन द मिडफील्ड. माउंट को सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा. एंथोनी विल बी देयर, एंथोनी को खेलना होगा. आई थिंक एक थोड़ा सा अटैक उनका टूथलेस लगता है विदाउट एनी क्वालिटी विंगर. आई थिंक एंथोनी को उन्होंने साइन किया था फॉर दीज मैचेस अंकित भाई, 100 million euros, लाइक इट्स नॉट लेस. सो ये वो मैचेस है जहां पे ही शुड बी प्लेइंग. Again, matches me, he's not playing. Mount is playing and Bruno is playing the right wing. Then he should be really concerned about his position. So yeah, maybe I think he would start. मुझे लग रहा है 90% he would start. अच्छा, मैं ये भी बोलता हूँ, थोड़ा सा ऐड करूंगा. जस्ट आई थिंक जैसे हमने डिस्कस किया था, कैसेमिरो कैन बी द की मैन. अगर कैसेमिरो को आप फ्रीडम दोगे टू हैव दैट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, बीट इन टर्म्स ऑफ आमराबाद या बेसिकली इट कुड बी इवन लाइक फॉर ऑल वी नो मैकटोमिने. क्योंकि अगर आप एक जॉब करने के लिए बोलो तो ही इज नॉट अ बैड गाई. आई नो हम काफी बार इजीली ट्रोल करते एंड आई नो दे हैव अ लॉट ऑफ इंजरीज. लेकिन अब हैरी मैग्वायर का भी, लॉर्ड मैग्वायर की बात करें तो आई डोंट थिंक इज हैड अ बैड सीजन जब भी आया है पिच पर, बीट फॉर क्लब और कंट्री. तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं मिली है. देवेश अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है ही है. यस, एवरीवन वांट भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, टू ऑफ द क्लब्स हु आर, वो सर्वे बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ. सर्वे जो होते हैं ना, दे आर सेइंग दैट वी आर टू ऑफ द मोस्ट हेटेड क्लब्स. वो अलग बात है कि बिकॉज वी हैव मेनी फॉलोअर्स, तो कुछ तो भाई हेट भी होगा, दैट ऑलवेज कम्स. बट आई थिंक आई हैव अ फीलिंग कि यार ईटीएच माइट जस्ट गेट. वो एक होता है ना, लास्ट सीजन भी एक पॉइंट था जब वन विन अगेंस्ट लिवरपूल वाज इट, उसके बाद चेंज हो गया था. एंड दे गेटिंग वन विन, यू नेवर नो. Yeah, अभी भी इतनी yeah, बुरी नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड की नहीं स्क्वाड, है. इफ आई एम बीइंग रियली रियल. विप्रा, यस, आर्सेनल फैन नाउ, यू आर कमिंग टू आर्सेनल फॉर श्योर. तो गाइस एवरीवन, मैं देखा आपकी स्कोर प्रेडिक्शंस, मैनचेस्टर यूनाइटेड गैलेटासराय की, कोपेनहेगन, बायर्न म्यूनिख. जी भाई, नो सरप्राइजेस देयर, गोइंग विद बायर्न म्यूनिख. लेट्स कीप इट सिंपल, वो वाला. आई थिंक yeah, वो ऑलरेडी अपने स्कोर कार्ड को अपने वहाँ पे स्टेडियम में टेस्ट कर रहे हैं विद लेवांडोव्स्की हैट्रिक इन 12 minutes man. So yeah, they have already given up. जोक है वो, but still I believe they are Bayern definitely for this one. बायर्न फॉर Too श्योर, much to एग्जैक्टली. ask. और आई थिंक टूकल को यही सलाह दूंगा यार, ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कर, गो विद द ट्राइड एंड टेस्टेड इज बेटर. क्योंकि आई थिंक ऑल द बायर्न ना क्रेजी ग्रुप स्टेज परफॉर्मेंस रहा है ओवर द इयर्स. इफ दे लूज दैट रिकॉर्ड ना, कहीं ना कहीं ब्लेम विल कम ऑन टूकल, आई नो इट. ज्यादा मैं सुन रहा हूँ. तो आई थिंक जस्ट गो विद द नॉर्मल थिंग, वो जीत जाएंगे आराम से. तो लेट्स मूव टू ग्रुप बी, आर्सेनल फैंस इन द हाउस. लेकिन उससे पहले आई थिंक लेट्स डिस्कस क्विकली नापोली रियल मैड्रिड यार. ग्रुप सी, ग्रुप बी पर जस्ट नेक्स्ट आएंगे राइट अबाउट. Napoli versus Real Madrid TikTok video has been the story last एक हफ्ते में जी भाई. It has been technically cleared, but do you think सच में Napoli ने जो statement दिया है, are they apologetic or are they just saying कि नहीं नहीं हमने वो mean नहीं किया था? How can you understand that? मैं तो पहले भी बोला था while what they did is totally wrong. इतनी बेवकूफ भी तो होगी Napoli to kind of do it on purpose यार. Pretty sure they will not do it on purpose what they did ना Osimhen के against in terms of the TikTok videos. They knew what they were doing, Ankit bhai. They're not that stupid. De Laurentiis haram khor hai, बहुत बड़ा. And this is अच्छा, you something think it's against the. तो कुछ हुआ मुझे है लगता है behind the it's, scenes you mean? yeah, absolutely, it's a move. क्योंकि the thing is कि they want to. De Laurentiis से बोला भी ना या कि he would not want to have African players because वो चल जाते हैं for the AFCON जो उनका होता है, and he would not want to have a player from Africa. तो ये ही चीज है. I think कहीं ना कहीं he is wanting to let the teams know कि he is willing to sell Osimhen maybe even in January. Teams would come in and they'll bid for him. पता नहीं क्या मूव है. डी लॉरेंटिस है हरामखोर या वो चीजें लेकिन करता ऑलरेडी है. वाज ही नॉट वांटेड, लाइक चेल्सी तो आई नो He तैयार थी already लेने के wanted लिए. it, but then they were very adamant, right, कि they would not sell him. But कहीं ना कहीं I think De Laurentiis is a guy जो कि दिमाग अपना वो सही बोला आपने, ये वो डैनियल बदल देता लेवी है. ऑफ ना इटली है वो बेसिकली. Exactly, वो आज बैठेगा कुछ सोचेगा, वो कल करेक्ट. बैठेगा कुछ और सोचेगा. He's like that. He's very very shaky in his thinking and approach. So this is all the doing of De Laurentiis मेरे opinion में, and this is what has happened. Yeah, that was very foolish of them to do, trolling your own player. You don't do that यार. और Victor Osimhen is hurt man. He is hurt for what has happened, and इसी वजह से कहीं ना कहीं ये it's like एक mess है
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नापोली में, एंड कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज मैड्रिड उठा सकती है. सो इस मैच में नापोली विल हैव टू फॉरगेट ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड. ओसिमन शुड स्टार्ट एंड दे शुड प्ले लाइक अ टीम टुगेदर, एंड ह्यूज प्रॉप्स टू यार ओसिमन फॉर दैट प्रोफेशनलिज्म. यार बंदा आता है एंड ही इज लाइक वो ही स्टेटमेंट डज आया इट. है, मतलब हाँ, हिज टीम इज एक्चुअली पुट अप अ स्टेटमेंट एंड ऐसा नहीं, नेपोली तो भाई बहुत ही मतलब ऑन द फेंस वाला स्टेटमेंट डाली है, लेकिन ओसिमन का बहुत ही मतलब लव फॉर नेपोली वाला स्टेटमेंट था, तो डेफिनेटली ह्यूज प्रॉप्स फॉर हिम. लेकिन ये भी है ना, ओसिमन को पता है कहीं ना कहीं दैट ही इज लीविंग नेपोली, मतलब मुझे लगता है दैट इज रिटन ऑन द वॉल. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इफ, व्हेन एंड नॉट इफ वाला चीज है ना. और ये मैच कैन बी द ऑडिशन जो आप डिस्कस ही कर रहे थे. रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड, मतलब प्रीटी श्योर बेंजेमा को रिप्लेस करना इजी नहीं है, लेट्स बी रियल अबाउट इट. बट Hosselu on loan, do you think that Hosselu with Vinicius Junior coming back, with Bellingham playing the role जो खेल रहा है goal scoring midfielder, should be enough if they secure the back line जो इंजरी से जूझ रही है अभी मैड्रिड इस पास सीजन के बहुत लिए पैसा एटलीस्ट? है. बहुत पैसा है मैड्रिड पास, ठीक है. दे शुड गो फॉर अ डिफेंडर यार. सरप्राइज्ड है कि एडर मिलिटाओ की इंजरी हुई, इन कार्लो अंcelotti अनाउंस करते हैं कि हम किसी को साइन नहीं करेंगे. फ्लोरेंटिनो पेरेज रन्स दिस क्लब इन अ डिफरेंट वे. उसका अप्रोच ऐसा नहीं है, लाइक इंजरी डिपेंडेंट नहीं है कि ये बंदा अवेलेबल नहीं है तो ये कर दो वो कर दो. दे बिलीव इन द 11 एंड दैट्स व्हाट रियल मैड्रिड की फिलॉसफी रही है इस तरीके से फॉर अ लॉन्ग टाइम. वी हैव सीन देम इवन इन अ ट्रांजिशन सीजन, दे गो ऑन विन द लीग, go on and win the Champions League भाई. तो no reason to doubt Madrid over there, but इस बार कहीं ना कहीं they might get exposed because defensively yes they have not been very solid, although उन्होंने goals ऐसे इतने concede नहीं किए but they have often led goals चांसेस through कंसीड कर रहे problems, हैं काफी. chances बहुत एटलेटिको concede किए मैड्रिड हैं. गेम वाज एन एग्जांपल नहीं? या एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम था. बट ये आप सही कह रहे हो यार, यू नो, not to focus upon attack so much midfield to they are set for the next 100 years. बिल्कुल. Defense में is something that they have to improve, and yes, एक striker would change their game. Osimhen to Real Madrid would be a game changer more than Kylian Mbappe. Osimhen would be terrific lad for them, and back में they have to improve, get another quality defender. आप देखो भी ना उनके डिफेंडर एज हो रही है अब. अलाबा इज व्हाट 33 है, समथिंग 32 33 समथिंग लाइक दैट. रुडिगर भी 29 समथिंग है, 29 30 है, क्लोज टू दैट. Militao was the only young defender. Even Nacho is close to 30 यार. So that is the thing. They need to get in some young defender, Antonio Silva या फिर I don't know, Scalvini या whoever they pick on. But a right back, a defender, and a forward is the way to go. और प्रॉब्ली यार फॉरवर्ड तो भाई ओसिमेन ही होगा आंसर, एज मच एज एम्बापे हम बोलना चाहेंगे. नो, आई डोंट थिंक दैट्स हैपनिंग रियलिस्टिकली, नोइंग हाउ पीएसजी आर बिल्डिंग टुवर्ड्स देयर प्रोजेक्ट. लेकिन हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने स्टार भी किया था नीलेश, इन टर्म्स ऑफ क्वारा. क्वारा टू बी ऑनेस्ट काफी दिनों बाद भाई सीरिया में गोल स्कोर किया है. द डक हैज बीन ब्रोकन अगेन. कहीं ना कहीं क्वारा इज ग्रेट प्लेयर एब्सोल्युटली. वो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो चेंज ऑफ बर्स्ट ऑफ पेस होता है, दैट्स ब्रिलियंट टू सी. मतलब ऑन दी आई तो कोरा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, टू जस्ट टू सी ऑन द Yeah, आई. seriously, yeah, लेकिन सो इज seriously. राफाएल लियाओ भाई. जी भाई नोज इट, आई एम बिग फैन ऑफ राफाएल लियाओ एज वेल. Ah, यहाँ पर क्वेश्चन आया था क्वारा, राफाएल लियाओ और लुइस डियाज व्हेन ही इज इन फॉर्म एंड फिटनेस, राइट? मतलब तीनों में से विच प्लेयर आर यू पिकिंग ऑफ? विनीसियस जूनियर तो खैर नेक्स्ट लेवल है, विनीसियस जूनियर को तो ऊपर रख रहे हैं अपन लोग. ठीक है. उसके बिलो इफ यू आर गोइंग विद क्वारा, लुइस डियाज और राफाएल लियाओ, हु वुड यू पिक? I would not call Kvaratskhelia a one season wonder क्योंकि बंदा one season खेला ही या है. डेफिनेटली And नॉट. you can't go on and judge that. Season होने दो. He might not score as many goals जैसे उसने पिछले साल किया. He might do that as well. तो give the lad a chance as well. But in सब में से यार, इन तीनों में से अंकित भाई, like डिफिकल्ट है बहुत लेकिन. sample size नहीं है, difficult है. I would go for एक सी मैं इनमें से पता नहीं क्यों दियाज को पिक करने का मन कर रहा है मुझे. आई माइट इवन इंक्लाइन फॉर लियाओ एज वेल, बट द थिंग इज कि डियाज इज क्वाराडोना मोर के प्रूवन एंड अगेंस्ट कंसिस्टेंट काइंड ऑफ नहीं. यही बात है. यही बात है. मतलब क्वालिटी मुझे इन सब में से पता नहीं क्यों क्वारास्केलिया की ज्यादा हाई लगती है. सीलिंग मुझे इनमें से सबकी सबसे हाई क्वाराडोना की लगती है. बट स्टिल लाइक आई सेड भाई, सैंपल साइज नहीं है टू जज हिम. बट डियाज ऑब्वियसली ज्यादा लंबे टाइम तक हमने देखा है, लियाओ को हमने काफी टाइम तक हमने देखा है. सो इन दोनों से मैं पिक करूंगा. आई विल गो विद डियाज बिकॉज मुझे उसका डिफेंसिव वर्क रेट भी बहुत अच्छा लगता है. प्रेसिंग इज वेरी गुड, एंड whenever he steps on the pitch feels like he has a point to prove. He's multi-dimensional as well, cuts in and can go wide as well. Liao, as much as I love him, his runs, his dribbling, his finishing, next level है. बहुत difficult है to pick one of these, so I rather will go with just Rashford. Wow.
तो राशफोर्ड इज द ऑड वन आउट। आ गए भाई। तो यहाँ पर सूरज बोल रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड डिस्कशन हो गया भाई। राशफोर्ड ऑफ कोर्स बोल रहे, सूरज भी ऑफ कोर्स भी का मैनचेस्टर, लेकिन मैं काफी सरप्राइज हूँ, बट ही इज गॉन विद द सेफ आंसर। अजीब भाई, आई नो दैट। आई थिंक मेरा पर्सनल तो ऑब्वियसली एक बायस तो लिया होगा वहां पर, बिकॉज आई थिंक जब लिया अच्छा होता है ना, आई थिंक ही इज slightly above the other two, लेकिन Yeah, कंसिस्टेंसी के मामले इवन आई वुड गो विद वन ऑफ द अदर टू एक्चुअली। yeah, दैट्स माय yeah. आंसर। मतलब वन ऑफ मैच, कप मैच में मैं लियाओ को लूंगा, मतलब ही हैज दैट Okay. वाव वाव Yeah, वाला फैक्टर है। yeah. बट एनीवे, लेट्स मूव ऑन यार। नापोली रियल मैड्रिड गाइस, प्रेडिक्शंस जी भाई आपके। सेंटर बैक शायद मिसिंग है नापोली के, एटलीस्ट एक इफ नॉट बोथ। Rahmani and Juan Jesus, Nathan and Ostigard might play. I'm looking for a draw, Ankit bhai. ड्रॉ हो सकता है, could be a 1-1 ड्रॉ. Really don't know यार ये इस मैच में, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं and it depends on the day what can exactly happen. In form देखो होम नापोली का है, सपोर्ट बहुत अच्छा है उनका obviously. I think onus would be on to them यार, how they are conducting the play. But एक बार Madrid gets their game going, if Cruz sets the tempo of the game, then फिर it becomes very hard. So it could be 1-1 draw मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, 1-1 draw for the team यार. या मतलब आई कैन नॉट सी नापोली लूजिंग दिस, पुट इट दिस वे। मतलब मुश्किल है टू बीट देम इन नेपल्स मुश्किल यार, है, मतलब इट्स नॉट इजी। हाँ. या और अग्रीड, +1. रियल मैड्रिड अगेन स्ट्राइकिंग एबिलिटी में, आई नो दे आर टॉप ऑफ ला लीगा एज थिंग्स। रियल मैड्रिड टॉप होगी ना वापस से, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी, टॉप है एज या. थिंग्स स्टैंड, हाँ ला लीगा में। बट जस्ट अबाउट, ऐसा नहीं कि यार उन्होंने एकदम धो डाला है ला लीगा को, नो, इट्स वेरी नहीं, हाँ. क्लोज। सो आई थिंक या और सॉलिड लग रही है नापोली कंपेयर्ड टू लास्ट सीजन, डिस्पाइट अटैकिंग में इश्यूज है इन टर्म्स ऑफ द फ्लो ऑफ फुटबॉल। सो यस, आई एम गोइंग विद द नापोली नैरो विक्ट्री और अ ड्रॉ एज वेल। भाई एक क्विक वर्ड अबाउट यूनियन बर्लिन यार, ब्रागा के साथ है जी भाई। यूनियन बर्लिन काफी इंप्रेस की है इन दैट फर्स्ट मैच, बट सीजन उनका इतना अच्छा नहीं रहा है जनरली इन बुंडेसलीगा। स्टोरी इज ग्रेट, एक्सपेक्टिंग न्यूकासल सीन्स इन बर्लिन। हारता बर्लिन हो रहा है प्रोबेबली. बाय द वे मैच हाँ, हाँ, उनके आई राइवल थिंक. के स्टेडियम में। हाँ, आई डोंट नो व्हाई ये क्यों हो रहा है, मुझे आइडिया नहीं इसका. Yeah, even I क्या don't know, but पता I just उनका read it now. स्टेडियम में भी, स्टेडियम इज नॉट ऑथराइज्ड फॉर अ चैंपियंस लीग गेम और समथिंग कुड हैपन. हर्ता बर्लिन वाला होगा. बट या दे वुड बी साइक्ड अप मैन. होम का गेम, होम वेल ऑब्वियसली उनके होम एग्जैक्टली नहीं है, बट देन यस दे विल फैंसी इट मैन. ब्रागा को यार थोड़ा अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए पुन्नू भाई. मुझे लगता है कि वोंट बी दैट as simple as 3-0. ब्रागा एक अपकमिंग यूथ डोमिनेंट टीम है. वन ऑफ द few youngsters जो वहाँ पे खेल रहे हैं ना, they are, look out for them. You will be hearing a few names from the Braga team. ठीक है, देखना इनको, ये गेम काफी अच्छा क्वालिटी मैच होगा. 2-1 for Union Berlin. ओके भाई, ये सब अभी अभी मैं पढ़ के देखा हूँ, नन ऑफ ब्रागास प्रीवियस 13 चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज मैचेस आर फिनिश्ड इन अ ड्रॉ। तो मतलब कैन वी एक्सपेक्ट गोल्स? लेट्स होप कि यार यूनियन बर्लिन थोड़ा Yeah. सा और ओपन खेले डिस्पाइट बीइंग वेरी Hmm. सॉलिड अगेंस्ट रियल मैड्रिड। लेकिन हाँ, इट विल बी अ क्लोज वन बोथ द गेम्स। इन फैक्ट इस ग्रुप के इट नॉट बी एज सिंपल इन माय ओपिनियन। तो भाई लेट्स गेट बैक। आई नो काफी आर्सेनल फैंस खफा थे कि भाई हम आर्सेनल बोल कर भी मूव हो गए टू अ रियल मैड्रिड नापोली ग्रुप, लेकिन करना पड़ता है भाई, पॉपुलर डिमांड, जनता जनार्दन, बैक टू आर्सेनल की ग्रुप। भाई टू बी ऑनेस्ट ना, हम बोल ही रहे थे आर्सेनल को ग्रुप में लिए यूरोपा लीग वाली इन द चैंपियंस लीग। लेट्स बी रियल यार, मतलब आई नो लॉन्स इज, मतलब इट्स वन ऑफ द Agreed. इंप्रेसिव टीम जो थी लास्ट सीजन इन द लीगा, बट इस सीजन शायद बहुत खराब शुरुआत हुई उनकी, डिस्पाइट एलाइव आई बीइंग देयर। आर्सेनल भी इंजरीज है जी भाई, बट प्रीटी श्योर अवे, डिस्पाइट जो अभी डिफिकल्ट रन होने वाला आर्सेनल का इन द प्रीमियर लीग, डू यू सी देम मेकिंग चेंजेस और नहीं? दे विल, आर्टेटा थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम खिलाएगा, क्या लगता है? I think strong team खिलाएगा. I think, but one player that I want to see is Fabio Vieira. यार, Kai Havertz, as much as he would be on the momentum after scoring that goal, confidence would be high. I like the off the ball movement of Fabio Vieira. उसकी general tendency to scan the pitch and to find that pass. Attacking wise थोड़ा सा एक better element लाता है. Kai Havertz has got shooting in him as well, but Fabio Vieira in general with his work rate, I think I prefer him. But yes, again, I think team में थोड़े से players missing है. The good that Saka would be there. Martinelli के लिए काफी खराब लगता है. Trossard, I don't think so. He's available. So Jesus would be on the left wing position again with Nketiah there. No doubt, no reason to doubt यहाँ पे Arsenal को. They should be winning this one. But Lens, yes, quality atmosphere होने वाला है वहाँ पे भाई. Remember, पहला Champions League fixture है उनके लिए यार. They would be psyched up man. एक miners gang है वहाँ पे, एक community है जो often, they are उनका जो main वो क्या कहते हैं उसको,
occupation वहाँ पे. It's like mining and everything. So अच्छा, they're very passionate. They're very passionate, and after a long time by Champions League, so they should be pumped इंटरेस्टिंग. up. Yeah. चलो भाई, एटमॉस्फेयर है. हैवर्ट्स मास्टर क्लास, नो फिनिशिंग एरर. जनरल प्रसाद बोल रहे हैं वियरा वुड बी सेफ फॉर सिटी. हाँ मतलब आर्ग्युबली वियरा इज द मोर इन फॉर्म. आप देखो तो एमिल स्मिथ रो को नहीं मिला है. मैं आई एग्री विद विप्रा. ईएसआर प्रोबेबली डिजर्व्स Shouldn't start. more minutes. No, shouldn't start. He deserves minute, but he shouldn't start in this game. मतलब minutes देना अलग बात है अंकित भाई, but matches नहीं, में लेकिन start जब करना स्पेशली जब आप बोल रहे अलग हो है. ट्रॉसार्ड इफ इज नॉट 100% fit, don't you think But कि then he has to be in form as well, right? He isn't in form. I love Emil Smith Rowe. भाई नहीं, मैं तो लेकिन वही बहुत है ना, पसंद करता हूँ समटाइम्स उसको. द प्लेयर्स नीड टू बी बैक. Exactly. और Trusted. हाँ. क्योंकि वो Yeah. लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद आया था, रिमेंबर, तो उसको एक रन ऑफ गेम्स देना बहुत मुश्किल होगा. सो गेम्स लाइक लॉन्स, डिस्पाइट इट बीइंग अवे इन द चैंपियंस लीग, Absolutely. आई गेट दैट. लेकिन हाँ, ये भी है कि यार आर्सेनल ने इतना इन्वेस्टमेंट किया फॉर द चैंपियंस लीग, लेट्स बी रियल. तो वो प्लेयर्स बोलेंगे भाई हमें क्या, मतलब यहाँ तो गड़बड़ होगी, हम तो यहाँ साइन किए थे बिकॉज ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल, अ प्लेयर लाइक थॉमस पार्टी स्टेड आर्सेनल में क्योंकि उसको पता है कि इतने सारे गेम्स हैं तो विल गेट अपॉर्चुनिटीज, राइट. जॉर्जिनियो, मतलब आप यू कैन ऑलमोस्ट आर्ग्यू दैट जॉर्जिनियो would actually be a ideal fit for an Champions League game for Arsenal. If Yeah. not, Yeah. the Premier League. तो I'm not sure if he's the great fit. लेकिन हाँ, definitely Champions League में I think he can, वो एक calmness चाहिए Arsenal को, not being in the competition for long. लेकिन ESR का I get what जी भाई बोल रहे हैं. आर्टेटा का substitution के बारे में कुछ बोलो. Always takes a long time. पिछले हाँ साका को I think injury जो हुई थी थोड़ी बहुत, I think people are saying, blaming आर्टेटा कि यार उसने substitute नहीं किया था. लंबे टाइम तक रखा था. आई रिमेंबर पॉटर का भी सेम हम गाली देते थे. दैट इज व्हाई रीस जेम्स वाज आउट फॉर लॉन्ग सीजन, लॉन्ग टाइम लास्ट सीजन. एग्जैक्टली वही हुआ था इन द चैंपियंस लीग अगेंस्ट मिलान, आई रिमेंबर. लेकिन विल पार्टे कम टुमारो? आई थिंक ही शुड. आई बिलीव पार्टे तो शुड बी देयर. एज पर द न्यूज़ ही इज फिटर, so I believe he should. Him and Jorginho, I can see them starting. सच में बोलूं तो. Okay, wow. Okay, very good, man. Because I think Partey and Jorginho as a pair works for me. हाँ, that works. That works for me as well. But I don't think so. राइस को बेंच करेंगे इस मैच में. जो भी है, राइस is starting मतलब मेरे ओपिनियन में. लेकिन राइस भी थोड़ा सा ईस्टर्न बर्ड्स था ना. ही वाज नॉट लाइक 100% फिट Okay. लास्ट टाइम, तो आई थिंक दे माइट नॉट टेक अ चांस कंसीडरिंग सिटी है नेक्स्ट. If तो दे that's माइट so, गो विद, मेक्स मोर सेंस इन माय ओपिनियन. भाई सब्स्टिट्यूशन ना, कोई भी अभी जो फैन है ना, कोई भी फैन खुश not नहीं है happy. सब्स्टिट्यूशन से. आई बी वेरी ऑनेस्ट. एनी फैन ऑफ एवरी क्लब, वो सब्स्टिट्यूशन इज द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन. सूरज, दैट ऑलवेज हैपेंस नो मैटर व्हाट. कभी कभी ये भी बोलते हैं ना, एट दैट लेवल मैनेजर्स के पास थोड़ा सा ईगो भी होता है. वी हैव ऑलवेज सीन ओवर द इयर्स. आई रिमेंबर लुई वैन गाल भाई इतना गाली देते मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस अबाउट हिज सब्स्टिट्यूशंस. वी यूज्ड टू गिव सारी के लिए. सारी का एक फिक्स था 65th मिनट वो लाता था चेल्सी में बार्कली को फॉर कोवाचिच एंड वाइस वर्सा. उसका फिक्स था बस. कॉन्टे यूज्ड टू वेट फॉर 70 मिनट्स. पेप ग्वार्डियोला 90 मिनट तक करता नहीं है भाई सब्स्टिट्यूशंस तो कभी कभी. तो लेट्स जस्ट लीव इट टू देम इन माय ओपिनियन. आई थिंक देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग मच अबाउट इट. लेकिन कोई नहीं. पीएसवी सेविया, क्विक प्रेडिक्शंस गाइस इन द चैट. एवरीवन सरप्राइज हियर फॉर सेविया कि नहीं? सेविया ऑब्वियसली यूरोपियन पेडिग्री ज्यादा है इन रिसेंट इयर्स, लेकिन क्या लगता है यूरोपा लीग कमिंग और चैंपियंस लीग में स्टे कर रहे इस बार? the very very weird यार ये group again, or this game can swing in any way, but मैं कहीं ना कहीं I would want to back Sevilla यार. narrow win मैं कह सकता हूँ अभी. again I would be thinking so 2-1 यार Sevilla के लिए. not doubting PSV, but मुझे लग रहा है कि Sevilla थोड़ा सा ज्यादा क्लास लेके आएगी with Campos, Lamela in there. I think मजा आएगा. Luke Bacchio has played very good पिछले मैच में, so मुझे लग रहा है कि 2-1 for Sevilla. देखते हैं. Yeah, I think कहीं ना कहीं I can see ये वाला गेम will be closer than we think. और पता नहीं, मुझे लग रहा है PSV क्योंकि बहुत अच्छे मोमेंटम में है and compared to Sevilla they might just nick it, but it will be a close game. Sevilla to get third in the group. सूरज, I think टारगेट उनका वही रहता है, लेकिन इस बार क्योंकि उनका ग्रुप ही यूरोपा लीग टाइप से ना तो कहीं ना कहीं वो सोचकर शायद टॉप कर ले. who knows, Arsenal will be like, oh really, come on. 2-1 to Sevilla. आचार्य भी बोल रहे हैं यहाँ पर रामोस टू विन यूरोपा. हर्षित तो बोल रहे हैं 2-1 टू PSV. सेविया 1-2. वाओ, इंटरेस्टिंग. इंडियन स्काउट्स इन द हाउस, क्या हाल है भाई? टॉक अबाउट यूरोपा लीग. इंडियन स्काउट्स आ गए भाई. यूरोपा लीग डिस्कशन भी करेंगे कल. डोंट वरी अबाउट इट. 100% हमारा तो खैर वो भी नहीं है. ज्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, उससे पहले कि लोग मुझे याद दिलाने फॉर श्योर. बट हैविंग सेड दैट आई बिलीव हम लोग कर लिएगा पूरा. हम लोग आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट थ्रू. ग्रुप डी नहीं किया हमने. ग्रुप डी हमने डिस्कस नहीं किया है. Yeah. Real Sociedad
इंटर मिलान वाला ग्रुप, सॉल्जबर्ग, रियल सोसिएडाड मतलब चैंपियंस लीग में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किए ओवर द इयर्स, वन ऑफ दोस टीम्स है फॉर श्योर, बट सॉल्जबर्ग एट द सेम टाइम बहुत इंप्रेस की थी इन दैट फर्स्ट मैच डे विन. दिस कैन बी वन ऑफ, अगेन जैसे पीएसवी सेविया है, वन ऑफ द ओपन गेम्स ऑफ द वीक हो सकता है. ब्रिलियंट गेम क्या होगा ये. बोलते हो, कुबो कुबो विद दिस सेलिब्रेशन अगेन? Hopefully Kubo with his celebration, but I would be wanting to watch Salzburg, Ankit bhai, one of the youngest team in the Champions League, यार Salzburg, और they boast of players under 22 जो खेल रहे होते हैं. Last we just talked about कि भाई पिछले fixture में they fielded 9 players who were under 22 years of age, उनमें से 3 teenagers भी थे. So you know about the quality, the prowess of this team, but Champions League में जीतने के लिए you need more than just that. So yeah, I think Sociedad have more experience थोड़ा सा. Linomard और Zubeldia की defending, Zubimendi over there. I think they are थोड़ा सा better team in terms of experience as well. So close एक win हो सकती है, but not doubting Salzburg. They play intense football. They play intense, very intense football यार. And I think ये game बहुत मजेदार, अच्छा game होने वाला है ये. Football lovers they would enjoy this game. एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक अगेन टियर्नी के लिए सैड क्यों यार विप्रा? क्या हुआ, इंजर हो गया क्या वापस? आई थिंक सोसिएडाड में खेल रहा है ना, फ्रॉम व्हाट आई Yeah, रिमेंबर. he's playing. Yeah, पिछले yeah. मैच में I I think it's think a he good came on. good opportunity for him. यार Sociedad is a हाँ very good team. मतलब come on, I know Arsenal तो भाई definitely they are अभी upward graph में जा रहे, but even Sociedad I will not be surprised if they come through the group यार. Against Inter Milan मतलब did not dominate that game. They did better in moments, but Inter Milan का, if not for hmm. Lautaro का goal, Sociedad would have Yeah, got 3 points यार. So I think I have to absolutely. back. I think ये वाला मैं अग्री करता हूँ कहीं ना कहीं. as much as Salzburg के पास पेस है, that youth element है, और आई नो काफी अच्छे स्ट्राइकर्स है वहां पर. सॉल्जबर्ग हैव सम रीसेंट यूरोपियन पेडिग्री, भाई यूरोपियन कंपटीशन में एक्चुअली अच्छा की है रिसेंटली, बट स्टिल आई थिंक सोसिएडाड हैव बीन अंडरवेलमिंग इन यूरोपियन कंपटीशन. अभी इट्स अबाउट टाइम वो एक टीम बिल्ड कर रहे फॉर देम टू काइंड ऑफ गो टू द नेक्स्ट लेवल. रिमेंबर, 2-3 प्लेयर्स है जहां पर टीम्स वांटेड सोसिएडाड प्लेयर्स, दे डिड नॉट लेट देम गो. आई Yeah, थिंक yeah. आई डेफिनेटली गेट दैट. अगेन मैन यूनाइटेड वो सब काफी हो गया. 3-1 टू सोसिएडाड. आचार्य बोल रहे हैं यहाँ पर. Interesting that injured for 3 months. Okay, Tierney is out for 3 months. भाई ये भाई injury is a major यार concern उसके लिए. हद यार, बेचारा इंजरी फिर से यार. टिर्नी अच्छा प्लेयर लगता है यार मुझे, किरण काफी टिर्नी अच्छा यार. प्लेयर लगता है यार मुझे, मैं काफी भूल अच्छा नहीं प्लेयर सकता. है. एफए कप फाइनल भाई, लैम्पार्ड फर्स्ट स्टिंट. who knew what would have been future of लैम्पार्ड उस समय अगर वो जीत जाता है एफए कप को. टियर्नी का बॉल था फॉर ओबामयांग, मुझे एकदम से याद है. और ओबामयांग काइंड ऑफ बीट जूमा एज दो ही डजंट एग्जिस्ट, और भाई स्कोर कर दिया. आई रिमेंबर Oh, फ्रॉम लेफ्ट चैनल Aubameyang आफ्टर scoring in पोर्चुगल that. इंजर्ड Yeah, थे. yeah, yeah. अरे गाइस हरामखोर. हाँ क्या हाँ बात है हाँ, भाई, हम पुलिस लोग इंजरी नहीं 200 है. लाइक्स भी नहीं हुए. सीरियसली गाइस, कम ऑन, लेट्स गो. 250 लाइक्स इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर द स्ट्रीम. वी कैन Come डेफिनेटली गेट on देम. अगेन बिग guys. शाउट आउट यहाँ पर सबको. यस यस जी भाई प्लीज. बिल्कुल. सो वही है. लास्ट मैच कौन सा, इंटर और बेनफिका? हाँ, इंटर बेनफिका इज द लास्ट मैच. तो यहाँ पर इंटर मतलब फॉर्म टीम ऑफ यूरोप आर्ग्युबली, along आई with थिंक यस. न्यूकासल. तो यस, दे आर अभी. हाउ दे आर हाउ टू विनिंग इट. बीट यार न्यूकासल जैसी है, वेरी डिफिकल्ट टू टीम वाला बीट है ये टीम है. स्ट्रक्चर प्रॉपर इंजागी रखता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट देम. ऑल्दो ससोलो ने जीता था आई थिंक एक मैच 2 हफ्ते पहले, हाँ बट स्टिल आई बिलीव इंटर का जो 3-5-2 है ना, दैट्स लाइक अ प्रॉपर इंटर काइंड ऑफ फॉर्मेशन. अभी दैट डजंट चेंज. आपके मिडफील्डर्स चालोनोग्लू एंड को भाई, वो बरेला क्या वर्क रेट रखते हैं. बास्तोनी बिहाइंड, डमफ्रीज ऑन द राइट हैंड साइड, डिमार्को. बेनफिका ऑन द अदर हैंड मिसिंग एंटोनियो सिल्वा, बट स्टिल बेनफिका अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते. ये ग्रुप भी क्या लगता है बेनफिका, big 3 point loss in the first match day against Salzburg, लेकिन between Salzburg, Sociedad, Inter और Benfica, what are you saying? Which two teams will come? Inter तो obviously I'm assuming it will come up tops. यार पता नहीं. आई वुड लाइक टू सी Sociedad going up there. They've got the quality, but I don't know अंकित भाई, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है टू गेस. बेनफिका पिछले साल they did very good. इस साल I still would want to bet on बेनफिका अभी तक यार. they'll have to bounce back, but ये गेम बहुत डिफिकल्ट होने वाला है उनके लिए. अगर ये गेम जीत गए वो, then you could say yes, they could be right up there, but it depends on the other two teams. Salzburg, yes, I think they have the quality, but मुझे लगता है कि lack of experience would take them to the Europa. बेनफिका और सोसिडाड में से आई थिंक कोई टीम जाएगी, बट या मुझे लग रहा है कि बेनफिका कैन स्टिल पुल अवे.
नाइस Di स्टफ भाई, Maria and ये all, सरप्राइज हो रहा है, मतलब इट माइट बी द हाँ, रिजल्ट ऑफ द वीक, क्योंकि फर्स्ट मैच डे में इंटर ने एक पॉइंट लिया था खाली, तो ये या थोड़ा टॉपसी टवी हो जाएगा ग्रुप। हो मतलब वी सकता है। वी डोंट माइंड यार, बीइंग समवन हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फेस मिलन, आई डोंट माइंड इंटर लूजिंग इट, बट रियलिस्टिकली मुझे लग नहीं रहा है, बट लेट्स सी, दैट्स व्हाट चैंपियंस लीग नाइट्स ब्रिंग्स ना। लेकिन हाँ गाइस, करीबन आई थिंक एक गेम तो शुरू होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आधी घंटा में। या लेकिन आज लेट किक ऑफ, आई थिंक जी भाई विल बी कवरिंग द लेट किक ऑफ एज वेल एज अस, तो लेट्स जॉइन अस एज वेल एज ऑन टॉकफुल एचडी एज वेल एज ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स। सब लोग भूलेगा मत मिडनाइट वॉच अलोंग, और कल भी हम करेंगे ये एज ऑलवेज। लेकिन बिग अप टू एवरीवन जो भी ज्वाइन किए। भाई जी भाई, टू एंड द स्ट्रीम बिफोर, विच प्लेयर आर यू लुकिंग फॉर टू मोस्ट? आपको क्या लगता है सुपरस्टार ऑफ मैच डे 2 कौन होगा? ओके, वाओ, मैचेस मैचेस खोल लो आप, जो वहाँ पे फिक्चर्स वाला वो खोले थे, आइडिया हाँ, लगेगा उससे। ऐसे पिक करना एक एक बंदा बहुत आई थिंक डिफिकल्ट है, फिक्सचर्स पर बट भी डिपेंड, एग्जैक्टली। आई थिंक हाँ इट हाँ, प्रोबेबली, अगर आप बोलो तो अमंग द स्ट्रॉन्ग टीम्स ऑन पेपर तो मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड हैव हैड एन इजी फिक्सचर, तो अगेन रैशफोर्ड माइट बी द पिक, बट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मे बी बायर्न म्यूनिख प्लेइंग अवे टू कोपेनहेगन, आई थिंक मे बी मुसियाला, are we going to see him ये लोग तो ball? परफॉर्म करेंगे। हाँ, ये संकित भाई, मैं आई डू हाँ, एक्सपेक्ट मुसियाला टू परफॉर्म, आई एक्सपेक्ट द lads to perform. मैं आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि व्हाट हैपेंस इन साल्जबर्ग वर्सेस सोसिएडाड यार। आई वांट टू सी कि हम्म, हाउ कुबो डज, आई वांट टू सी कि हाउ द शख्तार गाय अख्तरटोगलू डज yeah, द कैम इन दिस टीम यार। मैं इन प्लेयर्स को देखना चाहता हूँ, हाउ वेल कैन दे परफॉर्म। एंड या पोर्टो से एलन वेरेला के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ टू सी। सो यस, ये कुछ टीम्स हैं दैट वुड ऑलवेज surprise us with their talents. So yes, these particular बिल्कुल। players. चलो गाइस, सो लेट्स गेट सेट अभी, लेट्स सी यू एट मिडनाइट बोथ टॉकफुल एचडी एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स। अभी के लिए इतना जी भाई, ओपीआर लोग बोल रहे थे भाई, यहाँ स्पोर्ट फ्री को शॉर्ट बोल रहे थे वी नीड दिस डेली। भाई कल भी हुआ था, आज भी हुआ था, तो अभी के लिए तो डेली है, देखते हैं हाउ मच वी Yes. आर एबल टू कंटिन्यू दिस। ऑब्वियसली बिग अप टू जी भाई यार, तो ऑलवेज टेक टाइम एज मच एज पॉसिबल, एज वेल एज वी आर ऑलवेज अवेलेबल, यू नो दैट गाइस, फॉर यू ऑल। लेकिन अभी के लिए इतना ही है, सी यू वेरी सून एट द अदर साइड। गुड नाइट, बाय। Take care, guys.